वो अपने घर से निकल चुके हैं हमारे इस कार्यक्रम के लिए। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे बीच राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री साकिब कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, और उनके साथ ही हमारे बीच राजीव गांधी विश्वविद्यालय के ही रजिस्ट्रार एन.टी. रिकाम जी, वो भी हमारे साथ है, और कई दिग्गज विद्वान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यानी कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी आए हैं, और आज के इस कार्यक्रम के जिस विषय को लेके आप लोग के अंदर जो जिज्ञासा है वो हो ना हो आज ज़रूर शांत होगी। तो कुछ ही क्षणों में हमारा कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो कार्यक्रम हम बहुत ही शॉर्ट में कर रहे थे, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि ने हमें पूरा समय दिया है आज, और जो कार्यक्रम जिस हिसाब से करना था, जिस सीक्वेंस में करना था, वो सीक्वेंस रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। Ladies and gentlemen, our chief guest of today's program has arrived, along with the guest of honor. May I now request everyone present here to please stand up for the national anthem. शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, everyone. You may be seated. Ladies and gentlemen, I welcome you all to this magnificent hall as we celebrate the completion of 50 glorious years since the commencement of the very identity of Arunachal Pradesh. My name is Wangjo Bosai, PhD scholar from the Department of English. नमस्कार, सुप्रभात। मैं तेली मेचा, राजीव गांधी विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की पीएचडी की शोधार्थी, साथ ही आज के इस कार्यक्रम की संचालिका। आज हम सभी अरुणाचल प्रदेश राज्य बनने के 50वीं स्वर्णिम अवसर पर एक दिवसीय परिसंवाद के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। यह आयोजन अरुणाचल प्रदेश सरकार के आयोजन समिति द्वारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 50 वर्षों के दौरान किए गए विकास एवं परिवर्तन के ध्येय को प्राथमिकता देते हुए यह खास आयोजन किया गया है, जिसका लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश की युवाओं को केंद्र में रखकर परिप्रेक्ष्य किया गया है। Yes, indeed. Over the years, great personalities has contributed their effort in building the Arunachal we see today. And it is because of their tireless effort
that Arunachal Pradesh is one of the most harmonious state, if not the best, of India. आज के उद्घाटन सत्र में हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ है माननीय इंजीनियर ताबा तेदिर जी, शिक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश माननीय श्री पासांग दोरजी सोना जी, अध्यक्ष महोदय अरुणाचल विधानसभा माननीय प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, कुलपति राजीव गांधी विश्वविद्यालय माननीय प्रोफेसर सुम्पाम तंजांग जी, डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस एंड FES राजीव गांधी विश्वविद्यालय माननीय श्री NT रिकम जी, रजिस्ट्रार राजीव गांधी विश्वविद्यालय। साथ ही आयोजन में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे अध्यापकगण, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, विद्वज्जनों एवं दर्शकों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं मंच पर विराजमान अतिथियों एवं कार्यक्रम में पधारे सभी विद्वज्जनों से अनुरोध करती हूँ कि विश्वविद्यालय गीत के लिए आप अपने स्थान पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। स्रोत इस मंदिर का शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। धन्यवाद है परमात्मा इस पुण्य धरा को रचने का। शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। गर्व हमें इस विश्वविद्यालय आश्रय विविध कलाओं का। उत्कंठ सतत नवयुग नवस और नवोचर विदाओं का। असीम आकाश की संभावना गलता सदा तत्पर। उत्कृष्टता अमरता और शिक्षा दे धारण कर। आओ मिलकर सकल विश्व में मान बढ़ाए भरने का। शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। रोनो हिल्स चतुर्दिक जिसमें रीत प्रीत सम्मोहित ग्राम। लोक कला और संस्कृति परंपरा का अनगिन का। बौद्धिक चेतन शोध हमारा हर उत्सव इन गाँवों का। सुख दुख में सहभागी हम उद्योग निरंतर उज्ज्वल का। परमात्मा हमें आशीष दो। परमात्मा हमें आशीष दो हिम की बाटी ऊंचा बनने का। परमात्मा हमें वर दो हिंद महासागर बनने का। परमात्मा हमें वर दो हिंद महासागर बनने का। सारी बाधाएं पार ज्ञान हो विस्तार। सारी बाधाएं पार ज्ञान हो विस्तार। शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। शत शत नम वंदन अभिनंदन ज्ञान स्रोत इस मंदिर का। Thank you so much. You may be seated. And thank you so much for students of Fine Arts and Music. So ladies and gentlemen, I would like to tell you that before we proceed forward, we have arranged a small present as a mark of appreciation for our esteemed dignitaries. So to do that, I would like to request मैं दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर विराजमान अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर आयोजन को प्रकाशवान करें। दीप प्रज्वलन हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, जिसमें दीप के प्रकाश से अंधकार मिट जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए से पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. Thank you so much. As said, we have arranged a small present as a mark of appreciation for our esteemed dignitaries. So, to do that, first of all, I would like to request our Honorable Vice Chancellor to facilitate our chief guest of today, Honorable Chief Minister, sir. Thank you so much. Next to felicitate is our Honorable Speaker, Sir, Sri Pasang Dorji Sona. And to do the honor, I would like to request our Registrar, Rajiv Gandhi University, to please felicitate our guest. Thank you so much. Now, to begin with the program, I would like to request Professor Sumpam Tangjang, Dean Faculty of Life Science and Food and Agriculture Science, to pronounce a welcome address. Sir. A very warm greetings to all of you. Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh and Chief Guest of today's 50 years of Arunachal Pradesh celebration, Sri Pema Khandu. Honorable Education Minister of Arunachal Pradesh and guest of honor of today's program, Engineer Taba Tedir. Honorable Speaker of Arunachal Pradesh State Assembly and Chairman, 50 years of Arunachal Pradesh Celebration Committee, Sri P.D. Sona. Honorable Vice Chancellor, Rajiv Gandhi University, Professor Saket Kushwaha. Esteemed Registrar, Rajiv Gandhi University, Dr. N.T. Rikam. Other dignitaries, distinguished colleagues,
research scholars, and beloved students from Rajiv Gandhi University and its affiliated colleges, representatives from the media and the press, and ladies and gentlemen. Let me, at the very outset, extend my deep sense of appreciation and gratitude to the government of Arunachal Pradesh for choosing Rajiv Gandhi University as one of the collaborators for organizing the 50 years of Arunachal Pradesh celebration. I hope we will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable, and prosperous Arunachal Pradesh. We, the organizers, are particularly honored in extending a very warm welcome to the Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, Honorable Vice Chancellor, Registrar, and other eminent guests who have come to participate in the Golden Jubilee or 50 glorious years of Arunachal Pradesh celebration. I, on behalf of the organizing committee, take great pride and privilege in welcoming our energetic and visionary leader, who is none other than the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri Pema Khandu, who has very kindly consented to be the chief guest on the occasion of the 50 years of Arunachal Pradesh celebration. I'm extremely delighted at how fortunate we are to have him here today. He is very busy, and I'm glad that he has taken time out of his busy schedule for gracing this occasion. Welcome, and thank you so very much for honoring us with your presence, sir. It is a privilege to welcome Honorable Education Minister of Arunachal Pradesh and guest of honor of today's celebration, Engineer Taba Tadir, to this historic celebration. We, the organizing committee in particular, feel greatly honored and pleasure of having you with us, sir. Welcome, sir. It is also a matter of great pleasure and honor that we have with us here today the Honorable Speaker of Arunachal Pradesh State Assembly and Chairman 50 years of Arunachal Pradesh Celebration Committee, Sri P.D. Sona, who has taken time out of his busy schedule to be here this morning, and without whose guidance and leadership, this event would not have been possible at this scale. Welcome to you, sir. On this auspicious occasion, we are honored to welcome Honorable Vice Chancellor, Rajiv Gandhi University, Professor Saket Kushwaha, to the celebration. He has always been a source of inspiration and guidance for us, and was a pillar of strength as we tried to bring this program to fruition. We are blessed indeed to have such an inspiring leader in you. Sir, please accept our warmest welcome to you to this event. I would like to welcome Dr. N.T. Rikam, Registrar, Rajiv Gandhi University, who showed a keen interest in the endeavor and immediately offered to support us in every possible ways. Welcome, sir. I welcome Ms. Moiriba, Assistant Professor and PRO, Rajiv Gandhi University, who has personally executed and supervised all the arrangements for this celebration with speed and efficiency. Also, it gives me immense pleasure in welcoming all the dignitaries and my esteemed colleagues from Rajiv Gandhi University and all the participants to this event. I'm extremely overwhelmed to welcome the young and ignited minds, the research scholars, and all the students present here who are the future and will grow up to the responsible citizens of tomorrow. May they grow up to make us proud and achieve the highest human values. Last but not the least, I also extend a warm welcome to the representatives from the media and the press. With these 50 years of Arunachal Pradesh celebration, it is time
when the entire people of this beautiful state come together as one to celebrate our journey till that and march to an even glorious future where we create a better Arunachal Pradesh so that our future progeny can be proud of ourselves. The panel discussion after the inaugural program would be very interesting, which would provide a very unique opportunity for all of us because of its scope, and we are looking forward to an excellent interaction with the panelists who would be sharing new and exciting ideas and results. I again welcome one and all who have joined us in celebrating this historic event. Thank you all very much. Jai Hind, Jai Arunachal Pradesh. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके वक्तव्य से आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बहुत ही उत्साह आपने भर दिया है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी विशिष्ट अभिभाषण के लिए माननीय प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, कुलपति राजीव गांधी विश्वविद्यालय। आपके नेतृत्व में आज यह विश्वविद्यालय संपूर्ण देश में अपनी अलग पहचान रखता है। आपको सादर आमंत्रित। थैंक यू मैडम किली मेचा। आप सभी को साकेत कुशवाहा का प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। आज के इस कार्यक्रम में, इस सभागार में उपस्थित हम सभी के अभिभावक स्वरूप अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जावान चीफ मिनिस्टर साहब श्री पेमा खांडू जी, इस सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे बीच इस सूबे अरुणाचल प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री इंजीनियर ताबा तादिर साहब, हम सभी के बीच आज के इस कार्यक्रम को प्रिसाइड करने के लिए चेयर के रूप में आपके साथ उपस्थित, हम सभी के साथ उपस्थित ऑनरेबल स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पसांग दोजी सोना साहब, हम सभी के बीच उपस्थित DSW RGO, डीन ऑफ लाइफ साइंसेस, डीन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेसर सुमन तंजंग साहब, ऊर्जावान रजिस्ट्रार ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी डॉक्टर NT रिकम साहब, सभागार में उपस्थित जनरल मोहंती अतिथि के रूप में, हमारे विभिन्न महाविद्यालयों कॉलेजेस से आए हुए प्रिंसिपल, उनके अध्यापक, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी परिवार से आए हुए सभी अध्यापक, सभी टीम लीडर्स, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मिस मोइद की टीम, सभी शोधार्थी विद्यार्थी राजीव गांधी के यूनिवर्सिटी के एवं बाकी दूसरे कॉलेजों से आए हुए विद्यार्थीगण, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आपके सहयोग के लिए, आपकी भागीदारी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। किसी एक महान व्यक्ति ने ये कहा था, द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ए सोसाइटी इज रिवील्ड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन एंड द यूथ। उसी परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से और अपने देश में जब अपने युवा साथियों को एड्रेस किया, उनको संबोधित किया, तो उन्होंने ये कहा था कि सभी साथियों को ये विचार करना चाहिए कि देश की प्रगति अगर सही दिशा में लानी है तो एक साथ कदम कैसे मिलाते हैं। और कदम ताल का महत्व मुझे लगता है, हम में से बहुत सारे लोगों ने NCC, NSS और बाकी ऐसे कार्यक्रम में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें देखा होगा। मैं अपने इस ऊर्जावान राज्य को, अरुणाचल प्रदेश को, स्टेटहुड डे 50 वर्ष पूरे होने को हैं, 20 तारीख को हम मनाएंगे।
उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं अपने राजीव गांधी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों शोधार्थियों के बताना चाहूँगा कि प्रगति के लिए ये आवश्यक है कि हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर आप पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब को एक विशेष दृष्टि से देखें, when you look at the globe with a certain perspective, that means those countries who have progressed, developed country की जो कैटेगरी में कंट्रीज आती हैं, आप उनकी एनालॉजी अगर देखें तो आपको महसूस होगा कि डेवलपमेंट के किसी काम में देश का कोई नागरिक बाधा नहीं पैदा करना। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के आपको मैं कह रहा हूं कि जब किसी देश के नागरिक को अपने अधिकारों को ज़्यादा चिंता होती है अपने व्यवहार की अपेक्षा या अपने जिम्मेदारी की अपेक्षा, तो वो देश, वो राज्य, वो समाज पीछे जाता रहता है और वो कभी डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग स्टेट के पैरामीटर से ऊपर नहीं उठता है। इसलिए शिक्षा संस्थानों का महत्व बढ़ जाता है। शिक्षा संस्थानों से हम दो चीज़ों को मुख्यतः देखते हैं। पहली, जो हम अपनी टीचिंग के माध्यम से आपके विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं, आपको विचारों को पैना करते हैं, शार्प करते हैं, उसको एक डायरेक्शनल मूवमेंट देते हैं। एक तो हम ये करते हैं, दूसरा हम रिसर्च के माध्यम से अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। तो विद्यार्थी को ये निर्णय लेना होता है कि हम इन दोनों चीज़ों में बैलेंसिंग कैसे करें। जहां हम अपने अधिकारों की बात करते हैं वहीं पे हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने आना चाहिए, वहीं पे हमें अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करना चाहिए। विरोध एक अच्छी अभिव्यक्ति है, इज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज अ गुड थिंग, बट देन दीज टू ब्लेंड मस्ट बी बैलेंस्ड। तो सहयोग और विरोध के बैलेंस से अगर हम आगे बढ़ पाते हैं तो उस समाज को हम एक प्रखर समाज बोलते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में अपने माननीय मुख्य अतिथि को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि आप ये सारे इतिहास को जानते हैं। जिस इतिहास को हमने इन पन्नों में रखा हुआ है उस इतिहास को आप जानते हैं, और उस इतिहास के विकास के बारे में हम अपने अतिथियों से सुनना चाहेंगे, हम भी सीखना चाहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बड़े दिल से बता दूं, मेरे तकरीबन 3.5 वर्ष यहाँ पूरे होने को हैं, और मैं ये दिल से, मैंने दुनिया के दूसरे देशों में भी कार्य किया है, 14 वर्ष मैंने विदेश में भी कार्य किया है, लेकिन मैंने इतना हम्बल एडमिनिस्ट्रेशन जितना मैंने अरुणाचल प्रदेश में 3.5 साल में देखा, उतना मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। इसके लिए मैं इस देश को साधुवाद देता हूँ, इस राज्य को साधुवाद देता हूँ। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को मैं आज इस स्टेज के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपके पेंशन की जो एक संभावना बनी थी वो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने मेरे पहुंचने के बाद ही पूरी कर दी, और मुझे लगता है कि 30 अप्रैल से पहले मैं आपको सुखद समाचार दूंगा। इसके लिए मैं स्टेट का धन्यवाद देता हूं। आपकी पानी की व्यवस्था, आपके बसेस की व्यवस्था, और मैं अगर बहुत खुश हो के आपको बताऊं तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को 3 कैंपस जिनकी कुल ज़मीन अगर हम मिला दें तो तकरीबन 500 एकड़ से ज़्यादा होती है। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि 3 कैंपस, एक्सटेंशन कैंपस की ज़मीन जो 500 एकड़ से ज़्यादा की बनती है, और वो इस राज्य के 3 क्षेत्रों में उपस्थित है, उसको हमारे इस सूबे के माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बिना किसी कंपनसेशन से दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये स्टेटहुड डे के लिए, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के लिए और पूरे राज्य के युवाओं के लिए और सभी नागरिकों के लिए ये हर्ष का विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये राज्य अपनी अमूल्य सहयोग के साथ आगे बढ़ने में जो मदद दे रहा है वो शायद अतुलनीय है और पूरे देश में एक वर्णनीय है। मैं आप सभी को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप अपनी चर्चाओं में पूरे भागीदारी के साथ शामिल हों। हो सकता है कि आज आपके बहुत सारे कार्यक्रम हों, और
आप आधे अधूरे मन से इसमें भाग लें। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं विद्यार्थियों से भी ये कहता हूँ और आज आप सबसे कहूँगा कि आपके आज सारे काम जो भी हों उनको कल तक के लिए मुलतवी कर दें और इसमें पूरे मनोयोग से, पूरे शिद्दत से आप अपना सहयोग करें, जिससे हम एक अच्छी पोजीशन पेपर लिख सकें और अपने राज्य को दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सूबे को बधाई देता हूं, अपने राजीव गांधी कैंपस के विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, डॉन बॉस्को और अन्य महाविद्यालयों से आए हुए सभी बच्चों को का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय अरुणाचल, जय भारत। Thank you so much, sir, for your inspiring words. Indeed, the way to go forward is in cooperative and collaborative work. So now, may I have the honor to invite the guest of honor for today's event, Honorable Minister Education, Sri Taba Tedir, who is also the chairman of Sports and Literary Events of the 50 years Golden Jubilee Celebration team. आज की इस सिंपोजियम की मुख्य अतिथि श्री पेमा खांडू जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, श्री पी.डी. सोना, ऑनरेबल स्पीकर कम चेयरमैन 50 years of अरुणाचल प्रदेश, प्रोफेसर साकेत खुशवा, BC राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, Dr. N.T. Rikam, Register Rajiv Gandhi University, Professor S. Tangjang, Dean, Faculty of Life Science, Rajiv Gandhi University, Honorable MLA cum Advisor to Minister of Education, Sri Kentori Naji, most respected Rajiv Gandhi University faculty members and resource persons, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, यूथ्स, मीडिया पर्सन्स, अगर मैं यहाँ एसन प्रोफेसर मोयर रिवा का नाम ले लूँ तो मुझे बहुत अन्याय होगा, क्योंकि इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन की जो लिटरेरी एंड स्पोर्ट्स की मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन पूरे कार्यभार हमारा मोयर जी ने पूरा निभाया है। आज जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जितना भी 16 तारीख से लग आज तक या स्पोर्ट्स की जितना भी हमारे प्रिपरेशन चल रहा है, ये सब हमारी बहन एसन प्रोफेसर मोयर रिवा जी का है। आज इस 50 साल की अरुणाचल की जो दौर आई, उसमें मैं एक जीता जागता गवाह हूँ, क्योंकि मेरा जन्म 1962 में हुआ और हमारे अरुणाचल के नामकरण 1972 से हुआ, यानी कि 20 जनवरी 1972 को, और स्टेटहुड मिला हमारी 20 फरवरी 1987 को। और इस युग में मैं बहुत सा उतार चढ़ाव देखा। अपने अरुणाचल जब जीरो में, जब 1972 में अरुणाचल नामकरण हुआ, तब बचपन से देख के आज तक इस 50 साल की दौर में मैंने देखा। इस दौर के सही देखा जाए तो हमारे बहुत से क्षेत्र में हमने बहुत विकास किया है। मैं तो सपना भी नहीं देख सकता हूँ कि उस समय की क्या हालत था, आज की दौर क्या है। उस समय हमारी कहा जाए तो हमारी 1966 में एक ही कॉलेज था, JNC। आज हमारे बीच 19 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और हमारी 8 प्राइवेट कॉलेजेस है। साथ ही साथ हमारी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हमारी 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। इस प्रकार हमारे B.Ed के भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, उसमें भी 9 हैं। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी जो शिक्षा के विभाग में हमारे इस 50 सालों में बहुत आगे बढ़ा है। और इस टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में कहा जाए तो हमारी ईटानगर में NIT है, नेरिस जैसी डीम यूनिवर्सिटी है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस है, ट्रिम्स जो हमारी लोन मेडिकल कॉलेज अरुणाचल की है, और 6
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, एक हमारी प्राइवेट पॉलिटेक्निक है। और आज के दौर में हम देखा जाए तो जो स्टूडेंट की नंबर है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है, उस समय में हमारे बहुत 100 से भी नहीं होता था। आज हमारी 36,000 हमारे विद्यार्थी हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इस प्रकार हमारे अदर सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है, जैसे उसमें 3 है, तो प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस 3 है। इस प्रकार हमारे अपने गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेजेस जो आने वाले हैं, हमारे 2 इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहे हैं, हमारे एक तोरू में आ रहा है और एक हमारे नामसाई में आ रहा है। साथ ही साथ पाइपलाइन में हमारे और 2 मॉडल कॉलेजेस भी आ रहे हैं, कानूबारे और पियोंग नामसाई में। इस प्रकार कहा जाए तो हमारे जो 1961 जो हमारे जो लिटरेसी रेट था, उस समय में सिर्फ हमारे 7.13% था, और 2011 पे और जाके हमारे लिटरेसी रेट 66.95% हुआ। और आज की 2020-21 में कहा जाए तो हमारे 82.93% लिटरेसी है, जो हमारी भारतवर्ष की इंडियन की लिटरेसी रेट के हिसाब से 77.70 है। उससे देखा जाए तो हमारे एजुकेशन क्षेत्र में इस 50 साल में बहुत आगे बढ़े हैं। हम जब भी बचपन में देखते हैं कि मोर के देखते हैं कि उस समय में हमारे सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित, तिराप, 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। आज वो बढ़कर हमारे 26 डिस्ट्रिक्ट हुआ है। इस 50 सालों में हमने एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो बहुत आगे जंप किया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी की कहा जाए, रोड कनेक्टिविटी कहो, एयर कनेक्टिविटी कहो, रेलवे कनेक्टिविटी कहो, या डिजिटल कहो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहो, मैं एक चश्मदीद गवाह हूँ। जब हम बचपन में याजाली से जीरो जाना था, हमें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता था, कोई गाड़ी नहीं मिलता था। हमें याजाली से जीरो का हमारे 30 किलोमीटर है, उसको अगर हमको इवन बाल काटने के लिए हमें पैदल जीरो जाना पड़ता था। जीरो जाके अपने बाल काट के फिर याजाली आता था। और आज आप सोच सकते हैं कि उस याजाली से जीरो जाने के लिए 5-6 घंटा लगता था। आज हम ईटानगर से जीरो जाने के लिए 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। और यही नहीं, हम अपने बचपन में याजाली से आलोंग स्कूल जो आर.के. मिशन स्कूल है, वहाँ जाने के लिए हमें कम से कम 4 दिन लगता था। मैं याजाली से कोई प्राइवेट एक ही बस हुआ करता था, वो भी अपातनी मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक बस, उसमें चढ़ के लखीमपुर में आना, फिर लखीमपुर से हम ट्रेन में बैठकर शिलापत्थर तक पहुंचना, शिलापत्थर में पहुंच के लिखावाले में एक रात सोना, फिर लिखावाले से हम जब आलोंग जाने के लिए एक ही बस था, उसमें पहुंच के हम कम से कम 12 घंटे में आलोंग पहुंचते थे। आज की दौर में रोड की कनेक्टिविटी कहा जाए तो हम आज एक ही दिन में आलोंग पहुंच सकते हैं। और उस समय में पासीघाट जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, रोड कनेक्टिविटी नहीं था, रेलवे सिर्फ एक मात्र था। आज इस हमारे दौर पे हमने ईटानगर पे रेलवे के देखा, हमने कभी सपना में भी नहीं देखा कि रेल कनेक्टिविटी ईटानगर तक आएगा। इस मद्देनजर देखा जाए तो हमारे जितने भी कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी देखिए, आपके हर जगह पे हेलीपैड बन गया, एयरफील्ड बन गया है। आज आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में हमारे ईटानगर भी बाकी देशों से एयर कनेक्टिविटी जुड़ा जाएगा। इस प्रकार हमने बचपन में देखा जो हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, जो आज उस समय में हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या था, आज की दौर में हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है। हम उस समय में पूरे साल भर खाने के लिए फसल नहीं मिलते थे, क्योंकि हमारे जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ करता था। उसकी सरकार की नीति चेंज करके उसको आज वही ट्रेस कल्टीवेशन, WRC, टेरेस कल्टीवेशंस और हॉर्टिकल्चर में इतना सरकार ने इम्पोर्टेंस दे के आज हमारे अरुणाचल एग्री हॉर्टिकल्चर में भी, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में कहा जाए जो कीवी जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है हमारे अरुणाचल में, पूरी भारत देश में कहा जाए, उस प्रकार हमारे कार्डमम, जो हमारे लार्ज कार्डमम अरुणाचल में, जो पूरे भारत के लिए भी एक महान एक एग्रीकल्चर में बहुत नाम मिल रहा है। इस प्रकार मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि हमने इस 50 साल की जो 72 से 2022 तक की दौर देखा, हमने
आज जीता जागता सबूत हूँ, हमारी अरुणाचल बहुत आगे बढ़ा है और आने वाले समय में भी आशा करता हूँ कि और आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमें यूथ को बहुत आगे आना पड़ेगा। आप हमारी स्टूडेंट्स को, जो इंटेलेक्चुअल है, हमारे यंग लोग हैं, उसको आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो पैन अरुणाचल की सरकार लेके पूरे अरुणाचल को आगे ले जा रहे हैं, आज अरुणाचल कहा जाए तो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है पूरे देश में, और इसके लिए हमारी सरकार को इवन अवार्ड भी मिला है फर्स्ट पोजीशन के लिए। इसलिए मैं यहाँ जितने भी यूथ आए हैं, इसमें मैं आह्वान करूँगा कि आप सब एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए स्टेट की पॉलिसीज़ पर। कल के आने वाले समय में हमारे अरुणाचल बेहतर हो, और साथ ही साथ आप सब कंस्ट्रक्टिव पार्ट और प्ले करना है कि हम अरुणाचल को वाइब्रेंट और प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने के लिए। और साथ ही साथ जितने भी यूथ है, हमारे एजुकेटेड लोग हैं, हम अरुणाचल को पैन अरुणाचल रूप में ले जाना चाहिए। और हम अपनी, आप सबसे मैं यही आह्वान और निवेदन करूंगा कि हम सब अपनी मातृभाषा को प्रिजर्व करना है, और साथ में अपनी मातृभाषा के साथ साथ अपनी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर को भी हम प्रिजर्व करना पड़ेगा। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हम क्यों कहते हैं कि मैं निसी हूँ, मैं अतागिन हूँ, मैं अपातनी हूँ, मैं आदि हूँ, गालो हूँ, ये नहीं कहते। हम नहीं कह सकते कि मैं अरुणाचली हूँ। हम अरुणाचली है, हम भारतीय है, मैं भारतीय हूँ। ये शब्द कहने से हमारे देश और आगे बढ़ेगा, अरुणाचल और आगे बढ़ेगा। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने भाषण नहीं बढ़ाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your encouraging words. Indeed, our state, Arunachal Pradesh, is taking huge strides in the field of education under your leadership. Now, we have a folk presentation by the students of Department of Fine Arts and Music, Rajiv Gandhi University. So I request the students to kindly come over here and present your folk presentation. Hello, check. Hello, check. Hello. Sekamyo di songuno di tumputu hakabusi ayu hami sinyo agalicho ayotane ka hvyotane halu soi somi hami sotu agatne atopsa ka hisimpsa halu ngari ngarmi
Kami ngartu agatene Siri rumia Anaga akanyu Siri rumia Akan Siri rumia Anebo puilo Siri rumia Abobo leilo Siri rumia O jumla akanyu Siri rumia Muniga yachilo Siri rumia Jimega yachiba Siri rumia Siri rumia Siri rumia Slobo aloso daminda Lodobo aloso daminda Silobo aloso daminda Lodobo aloso daminda Munolo mundolo daminda Haribala mundolo daminda Silobo aloso daminda Lodobo aloso daminda Munolo mundolo daminda Dereja mundolo daminda Silobo aloso daminda Lodobo aloso daminda Munolo mundolo daminda Nichinat mundolo daminda Silobo aloso daminda Lodobo aloso daminda Munolo mundolo daminda Sinadbo mundolo daminda Silobo aloso daminda Lodobo aloso daminda Silobo aloso daminda Lodobo aloso daminda Silobo aloso daminda Lodobo aloso daminda Takare benengona bene konengona Takare benengona bene konengona Takare benengona bene konengona Takare benengona bene konengona Gululo kurum lorum chirum dolo Takare benengona bene konengona Gitage tadege pchajiname Takare benengona bene konengona Nimane talayu charni talayu Takare benengona bene konengona Gitage tadege pchajibayu Takare benengona bene konengona Takare benengona bene konengona Takare benengona bene konengona Oi padama nyani Padamenyanye go goi godalo Goi nyanya deki Nyanye deki go goi godalo Goi momanga moko Momanga moko go goi godalo Goi sodoka putung Sodoka putungo goi godalo Goi purma pulang Puruna fulengo goi godalo Goi kodalong Goi goi godalo Dalia dalili talakor goye Dalia dalili talakor goye
जिनेगो दलिया दलीली दल कोर गोया अगना बोलू कम कमिन बगन बे तादुक अय्य गोमाबे तुमिन अय्य गोमाबे तादुकम ललपे तुमिनम ललपे दलिया दलीली दल कोर गोया दलिया दलीली दल कोर गोया दलिया दलीली दल कोर गोया सा 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 नि द म ग म द नि सा 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 नि द म ग म द नि 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 सा सा नि सा ध नि सा ध नि सा ध नि सा नि नि द म म ध नि म ध नि म ध नि द द म ग सा म ग सा म ग सा 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 ग ग म म ध ध नि नि सा 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 ग ग म म ध ध नि नि सा 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 ग ग म म ध ध नि नि सा 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 दलिया दलीली दल कोर गोया बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस। आपातानी लोकगीत दामिंदा के साथ में शास्त्रीय संगीत को जो फ्यूजन हमें सुनने को मिला है, जिसमें प्राकृतिक ये जो दामिंदा गीत है इसमें प्राकृतिक वस्तुओं का गुणगान गाया गया है। साथ ही ये बताया गया है कि इस प्रकृति के साथ में यह समाज किस प्रकार बना है। लोकगीत के सुंदर प्रस्तुति के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष वक्तव्य के लिए आज के आयोजन में पधारे माननीय श्री पासांग दोरजी सोना जी, अध्यक्ष महोदय, अरुणाचल विधानसभा। आपके उत्साह और धैर्य का उदाहरण हम युवा पीढ़ी को हमेशा प्रोत्साहित करती है। मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। Good morning to all of you. It's my honor to acknowledge the presence of our Chief Minister, Sri Pema Khandu, for the Symposium, Development and Change in Arunachal in 50 Years, the Youth Perspective. And as a guest of honor, we have Sri Taba Tedirji, Honorable Minister Education. And on the days, we have Professor Kushwaji, the Vice Chancellor, Rajiv Gandhi University. We have Dr. N.T. Rikam, Registrar, Rajiv Gandhi University. Professor Sumpam Tangjang, Dean, Rajiv Gandhi University. And Honorable Member of Legislative Assembly, Sri Kanturina, distinguished guest, the entire team of Assistant Professor Moi Riva, who has organized this symposium today, students from different colleges and universities, media friends, ladies and gentlemen. I would like to thank the organizers for inviting me to chair this important symposium, which says development and change in 50 years in Arunachal Pradesh, the youth perspective. You have heard the Education Minister, he has spoken in detail the government's achievements and what the government has done in the sector of education and other sports. And when we talk about education, it directly relates to the youth and how government is committed to further take it ahead. As we all say, India has 34% of the youth population, and India is one of the youngest country in the world. And we always say the youth is our future. So when we say youth is our future, then it becomes a responsibility and commitment
not only for the government or not only for the social organizations, but every one of us has to come together and work together to attain this commitment. And Government of Arunachal has been focusing on the quality human resource. If I may be allowed to give an example, I had the privilege of working with Honorable Chief Minister when he was Minister of Tourism. We had some 17 posts vacant for the Tourism Information Officer. So those days, I'm talking about his vision for the youths and for the quality resource, quality human resource. So those days it used to be appointed departmentally, and with due apology, I would like to tell you that we never know what kind of quality people will come into the governance. So he had decided that we have to give it to the Public Service Commission to get good quality officers. So that was the first time he had taken that initiative. And there were a lot of resistance, people said, why to the APCS, it should be conducted departmentally. But he took a firm stand that we need quality people to be part of the government. So that was his vision. And now, if you see when he has become the Chief Minister, he has streamlined the Public Service Commission, and SSB has been introduced. So when I meet the young people, our younger lots, the youths, I tell them now, because the APCS officers, the new APCS officers, they had called on me, I told them, now you can walk with a lot of pride, because people know that you are in this position by dint of your hard work and your ability. So this is the kind of government under the leadership of our Chief Minister. We're doing it for the youth, because until and unless we have quality resource, human resource, I don't think we can take our state to a much higher category. So, like I'm been reminded of Franklin Roosevelt. Like I always say that you should not always look up to the government, that what government is doing for us. So he said, you cannot always build future for our youth, but we can build our youth for the future. So that's, when we talk about we can build our youth for the future, that means enough assistance, enough skilling, enough opportunity of the, quality education, and in different aspect of life, if the government is supporting with the, commitment and with the kind of dedication from the youth, then only it will help us. And secondly, when we say that, a lot of us think, no, I'm not capable of doing this, why should I waste my time, I should not do this. So we at times tend to give up, at a very early stage, not understanding our potential. So the youth should remember what Martin Luther King Jr. has said. If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. Do whatever, but keep moving forward. That should be the spirit. You should not give up. So that's a very important thing we all should imbibe in us. We should keep moving. Then only we will reach the goal. You may not be very fast, but slow and steady. When we were young boys, we have studied in our school that slow and steady wins the race. That story about the tortoise and the rabbit, we should remember that. So, Education Minister was mentioning, how he used to travel for so many days to reach his school. So I also want to reiterate, he is much senior to me. I come from a place called Menchuka, and we were in the same school. He was my senior.
So we used to walk for 7 days from Mechuka till Kaing. Then from Kaing, there used to be a bus service which used to take us to Along. 7 days in the mountains, sometimes it used to snow, sometimes it used to rain, and we were young, small boy. Sometimes we used to cry on the way, tired, but still, that was the kind of commitment, and that was the kind of, motivation given to us by our parents. Because my father, when he was young, and he was studying in Menchuka, that time the Menchuka had just till primary school. After that, he had to go for higher studies. So those days, the lower belt used to have SMS medium. There were only few Hindi medium schools that time. One was in Tawang. So he had to walk down all the way to Alo, then take a road journey by changing buses and trains, and then come to Bomdila. Again from Bomdila, they used to walk to Tawang. It used to take almost 15 days to reach. So these were the kind of commitment they had. So I see that the youths these days are too prone to the comfort. With thora bhi problem, so they tend to give up. You should try to learn from your ancestors, your seniors, and your parents. What kind of hard work they've gone through, because the kind of roads we have now, the kind of internet facilities we have now, the communication facilities, and everything. It's in your palm. For us, if we have to refer a book, we used to go looking for the book in a bookshop or maybe a library, where those days libraries was not available everywhere. But now if you want to really study, you have right on your palm. All the smartphones give you all the kind of information. You just have to Google it, you get it there. And I've been always saying that the Arunachal Assembly, we have such a beautiful library here. We have always communicated through this kind of platform, and even through officially also we have communicated that the college or for the library is open for all the college, university, and school students. They can come, use the facility for free of cost, but I haven't seen a single student coming up and registering themselves for the library. Then I feel, long time back, one of my friends told me, the safest property in Arunachal is books. Because no one tend to want to go to library, no one wants to read the book, so it is the safest property. That was like, in a very sarcastic way. So the things should change now, because you should try to use all the possible, way to get yourself equipped with knowledge, because knowledge is power. So I should not take much time, because Honorable Chief Minister is here. He will give you the government's perspective on what the government think of doing for the youth and what government has done. So I would only say to our youth, like Professor Kushwaha has said, we only talk about our rights. But at the same time, when we talk about our right, there's a duty attached to it, the responsibility attached to it. If you just only think about right and forget about your duties, then I think it is not a right approach, because right and duty are the two sides of one coin. So we see a lot of our youths gets misguided, they come to the street, they're shouting for, justice, and they will say, we want to do a democratic movement, but they end up doing very undemocratically. When they say they want to do democratic movement, they call for a Bandh. But Bandh is totally undemocratic. Supreme Court has said it is illegal. So we need to understand our responsibility towards the society, towards our state. Then only I think we can build a new Arunachal, build a better Arunachal, like Honorable Minister has said. Before anything, we are an Arunachali. Then your tribe, your religion, your community comes in. So, I would like to conclude my words with a famous quote from JFK. He has said, ask not what your country can do for you,
ask what you can do for your country. Then only we will be able to make our country great, our state great, with your contribution, with your responsibility, with your commitment. With these few words, I would like to thank you for inviting me to chair this beautiful symposium. Jai Arunachal, Jai Hind. Thank you so much, sir. Your words will definitely serve as an impetus for the youths of Arunachal. Now, ladies and gentlemen, I would like to share with you that along with the theme of celebrating the past and nurturing the future, the festival is running a parallel campaign on drug abuse called Arunachal Against Drug Abuse. And as we all know, that one of the main problems of today is drug abuse. So, to ensure that this campaign sustains even the month-long celebrations are over, a website has been developed to continue with the campaign. For that, to launch a site and to join the campaign by signing into Road to Recovery, may I request our esteemed dignitaries to please launch the website. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सही मायने में अरुणाचल प्रदेश में विकास हम सभी देख रहे हैं, जिसकी नए और मौलिक योजनाओं की गति से प्रदेश ने अपना वह मुकाम हासिल किया है जिसका ये प्रदेश सदा से हकदार है। खासकर युवाओं के आदर्श मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने वक्तव्य के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री पेमा खांडू जी, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश। आपको सादर आमंत्रित हूँ। आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे इस प्रोग्राम के चेयर ऑनरेबल स्पीकर, जो कि 50 इयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के चेयरमैन भी है, श्री पी.डी. सोना जी। सरकार में हमारे सहयोगी ऑनरेबल शिक्षा मंत्री श्री ताबा तेदिर जी, और हमारे बीच उपस्थित हमारे आरजीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत खुशवा जी, और हमारे रजिस्ट्रार श्री डॉक्टर एन.टी. रिकम जी, प्रोफेसर सुम्पन तांगजंग जी, डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस, और ख़ास करके यहाँ उपस्थित आप जितने भी आज जो इस प्रोग्राम को विटनेस और पार्टिसिपेट करने के लिए जो आए हुए हैं, आरजीयू के स्टूडेंट्स एंड आरजीयू के साथ एफिलेटेड जितने भी जो कॉलेजेस इन एंड अराउंड कैपिटल एरिया, और हमारा स्पेशल मेहमान ऑनरेबल एमएलए केंतो रीना साहब एंड माय सिक्योरिटी एडवाइज़र मेजर जनरल मोहंती जी, एंड आप सभी पैनलिस्ट और मीडिया के दोस्तों। फर्स्टली आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक ऑनरेबल स्पीकर साहब कि आपने जिस प्रकार से जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाया है, और साथ साथ आपके जितने भी जो मेंबर्स जो बहुत दिनों स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट दैट वी हैव सेलिब्रेटेड इन 20 जनवरी से लेके अभी तक, और क्लोजिंग सेरेमनी कल परसों स्टेटहुड डे में 36th ईयर ऑफ स्टेटहुड इस बार यूपीआ में मनाएंगा, तो वहाँ तक के लिए आप लोग बहुत सारा कार्यक्रम आयोजन किया है।
और अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड थोड़ा सा रेज हो गया, उसका कारण से हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज आर्ट्स वाइज जो 5 डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर नहीं पाया। नहीं तो जो प्रोग्राम का जो ओरिजिनल जो एजेंडा था कि सभी आर्ट्स वाइज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी मनाने का, उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ वहाँ पे रखा था। लेकिन टू मेक इट कट शॉर्ट, अभी यहाँ कैपिटल एरिया में बहुत सारा इवेंट अभी तक सेलिब्रेट करके आए हुए हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब लोग शायद देखा भी होगा। और जहाँ तक जो आज के जो कार्यक्रम है, टुडे इज़ आई थिंक इट्स द 3rd सेशन जो हमें बताया गया है। स्टार्टिंग आप लोग ने RGU कैंपस से ही स्टार्ट किया था और कल यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर में डिलिब्रेशंस हुआ था। और आज खास करके जो टॉपिक जो चुना है आज का पैनल डिस्कशन के लिए, डेवलपमेंट एंड चेंज इन अरुणाचल प्रदेश इन 50 ईयर्स, द यूथ पर्सपेक्टिव। ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक चुना है। तो मेरा अनुरोध आप सभी से रहेगा कि इसमें आप लोग खुल के डिस्कशन करने के लिए, एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल द पैनलिस्ट ऑल्सो। हमें उम्मीद है कि आज यहाँ पे जो डिलिब्रेशंस आप लोग करेगा उसको गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट एक मिलेगा। और आप लोगों को ये मैं बताना चाहेगा कि बहुत ही जल्दी हम लोगों का राज्य का बजट सेशन भी हम लोग आरंभ करने वाला है। वी आर स्टार्टिंग आवर बजट सेशन फ्रॉम 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि मार्च 11 से। तो हमें उम्मीद है कि आज के इस डेलिब्रेशन से कुछ ऐसा आप लोग प्रेजेंट कीजिएगा कि राज्य सरकार अपना बजट में भी उसको हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएगा। और बजट के लिए तो शायद आप लोग देखा भी होगा कि सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स हम लोग ने पब्लिक पार्टिसिपेशन और ख़ास करके यूथ्स को जोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया है। और डिजिटल का ज़माना है, इसलिए वी हैव ऑल्सो लॉन्च वन पोर्टल ऑल्सो, arunachalbudget.in। तो उसका लास्ट डेट है 20th फरवरी, शाम तक का टाइम है। तो जो भी आइडियाज़ आप लोगों को आता है कि राज्य में किस प्रकार का बजट होना चाहिए, आप लोगों का सोच क्या है, यूथ डेवलपमेंट के लिए क्या सोच है, whatever गुड थिंग्स कम इन योर माइंड, आज के थ्रू से भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो फिर पोर्टल में जाके भी arunachalbudget.in आप लोग ज़रूर लॉग ऑन करके अपना व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। Now coming to the main point, that development and change in Arunachal Pradesh in last 50 years, and that too the youth perspective. इसमें देखिए अभी since we are already entered into the golden jubilee era of naming of Arunachal Pradesh, 1972 में 20 जनवरी में इनका नामकरण अरुणाचल प्रदेश 0 में हुआ था। अभी we have entered 2022। तो उस बीच में स्टार्टिंग हम लोग ने नेफा टाइम से स्टार्ट करके, इसके बाद में 72 में जब यूटी मिला, इसके बाद आफ्टर स्पैन ऑफ आई थिंक अराउंड 15 ईयर्स इन 1987 हम लोगों को फुल फ्लेज स्टेट मिल के नाउ वी हैव एंटर्ड द 36 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड डे। तो उस बीच में अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यूथ्स का बहुत बड़ा रोल अरुणाचल प्रदेश को रहा है उसको शेप करने के लिए। पहले भी यूथ्स ने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो लीडर के रूप में हो या अपना समाज के लीडर के रूप में हो या ऑफिसर्स के रूप में हो। तो वही ट्रेंड जो है अभी भी हम लोग उसको बरकरार रख के हम लोग आगे लेके जा पा रहा है। You know, the best thing and the most interesting and most complicated thing about our state, मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग भी शायद सुन के बोर भी हो गया होगा, कि मैं हमेशा कहता हूँ अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है। और जो दिल्ली मुंबई में जो लोग बैठने वाला लोग पहले तो समझता था कि नॉर्थ ईस्ट एक ही है, बट विद इन द नॉर्थ ईस्ट में कितना डाइवर्सिटी है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, ये हम लोग जान सकते हैं। एंड विद इन अरुणाचल प्रदेश में कितना डाइवर्सिटी है। आज आप लोग अपना RGU के स्टूडेंट्स और अपना कॉलेज के स्टूडेंट्स जितने भी आज हम लोग अंडर वन रूफ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग कल्पना कीजिए कि अभी स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न मोस्ट से वहाँ से मोम्पा, इसके बाद फिर वेस्ट कामेंग में 6 ट्राइब है, फिर अपना निशी, इसके बाद आपातानी, तागिन, आदि, गालो, फिर ईस्टर्न साइड में जाएगा अपना इदू मिशमी, इसके बाद खमती, सिंगफो, और एक्सट्रीम ईस्टर्न में तिरप चांगलांग लोंगडिंग साइड में। तो इतना सारा ट्राइब है।
इतना सारा ट्राइब है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अरुणाचल इज़ ए वेरी परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मैं बहुत सालों से टूर करते रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश में। पॉलिटिक्स में आई हैव एंटर्ड पॉलिटिक्स इन ईयर 2011। आने के बाद हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था उस वक्त में एज टूरिज्म मिनिस्टर, तब से लेके अभी तक जब भी हमको मौका मिलता है मैं हमेशा अरुणाचल का टूरिंग में लगा हूँ। एंड इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट अपार्ट फ्रॉम इट्स दैट डायनामिक, और इसका अपना सुंदरता तो अलग है, लेकिन इतना बढ़िया प्रदेश है। तो इस प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर एक दो ट्राइब होता तो गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता कम्युनिकेट करने के लिए भी और आगे लेके जाने के लिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 26 मेजर ट्राइब एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स। और मेजर ट्राइब में भी ऐसे मेजर ट्राइब है कि फॉर एग्जांपल आई एम मोनपा फ्रॉम तवांग, और मोनपा तो दिरांग में भी है एंड खलकटांग मोनपा भी है तो हम लोग एक ही ट्राइब है, लेकिन खलकटांग और दिरांग का भाषा अलग, हमारा तवांग का भाषा अलग। हम लोग विद इन द सेम ट्राइब में भी अगर बात करें तो वी हैव टू इंटरेक्ट इन हिंदी और इंग्लिश। ये एक ट्राइब का बात कर रहा हूँ मैं। अभी हम लोगों के यहाँ पे अक्रॉस यहाँ पे 26 जो जनजाति यहाँ बैठा हुआ है, आप देखिए कि खाना अलग, पीना अलग, सब कुछ, अपना ड्रेस अलग होता है, अपना घर का आर्किटेक्ट अलग होता है। सो इस प्रकार का डाइवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश। सो उस ज़माना से नेफा टाइम से लेके 72 में जब अरुणाचल का नामकरण हुआ, सो अभी तक फॉर्चुनेटली अरुणाचल प्रदेश में मतलब बड़ा एक कुछ क्लैश विद इन द कम्युनिटी क्लैश नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेट मतलब इस प्रकार से एक बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है। फॉर दैट आई थिंक वी शुड ऑल थैंक टू आवर ऑल सीनियर लीडर्स, नॉट ओनली द पॉलिटिकल लीडर्स बट ऑल्सो अपना समाज को लीड करने वाला उस जमाने का एल्डर्स लोग हो गया, तो उन सबको हम लोग धन्यवाद करना चाहिए। तो इस जर्नी को अभी अरुणाचल प्रदेश को आगे लेके जाने में भी हम लोगों का यूथ का बहुत बड़ा रोल है। और ख़ास करके आप जो लोग यूनिवर्सिटीज़ जहाँ भी हो अक्रॉस नेशन या कोई एब्रॉड में भी पढ़ता होगा, और जो आज कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है, वही हम लोगों का कल का फ्यूचर है। आज ऑनरेबल स्पीकर साहब हो गया, मैं हो गया, और जितने भी हमारा ये प्रोफेसर साहब लोग हो गया, तो आने वाला दिनों में इसी डाइस को तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आप लोग ही तो रिप्लेस करना है। आप लोगों के ही तो इस स्टेट को संभालना है, नॉट ओनली एज एन पॉलिटिशियन बट एज एन एकेडमिशियन ऑल्सो, एज एन गुड बिजनेसमैन एंड एज ए गुड ब्यूरोक्रेट ऑल्सो। आप लोगों को ही तो इस राज्य का जिम्मेदारी आप लोगों को लेना होगा। और उसको जिम्मेदारी को लेने के लिए हम लोग का तैयारी जो है अभी से हम लोग शुरुआत करना होगा। सबसे पहले गवर्नमेंट का पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का अप्रोच। अभी अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा एक स्टेट है, सबसे मुश्किल तो हमें ये लग रहा है कि जैसे अपना ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी जो कहा कि हम लोगों को पैन अरुणाचल फीलिंग को जगाना बहुत ज़रूरी है। पैन अरुणाचल फीलिंग। सो इस पैन अरुणाचल फीलिंग को जगाने के लिए मैं आप लोग देखा हुआ कि हम जितने भी जो यहाँ पे ट्राइब्स के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पहले गवर्नमेंट अपना कंसर्न जो एपेक्स, हम सभी का समाज का एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है सोसाइटी का, जैसे हम मोनपा है तो हमारा मोनपा मिमांग सोकपा, निशी है तो अपना निशी इलाइट सोसाइटी, इस प्रकार से ABK है, GWS, मतलब अक्रॉस स्टेट में सबका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है एपेक्स बॉडी। तो ट्राइब को गवर्नमेंट का साथ में जुड़वाने के लिए भी कुछ डिसीजंस अगर लेना होता है तो कैबिनेट से पहले मैं हमेशा उन ट्राइब्स के लीडर्स को बुला के मैं कंसल्टेशन करता हूँ। बजट प्रिपरेशन में भी मैं उनको कंसल्ट करता हूँ, क्योंकि अरुणाचल का डायनामिक्स अलग है। अरुणाचल कांट बी कंपेयर्ड विद अदर स्टेट्स। बाकी स्टेट्स में तो बहुत कम ट्राइब होता है, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट आराम से हम लोग कर सकते हैं। बट टू मैनेज अरुणाचल प्रदेश, अगर गवर्नमेंट अलग दुनिया में बैठ के काम करेगा तो ये प्रदेश में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए टीम अरुणाचल का कॉन्सेप्ट मैं बार बार लोगों को बोल के आया हूँ। आज सही मौका है, आप लोग फ्यूचर जनरेशन्स हैं, हमेशा पैन अरुणाचल एंड दैट टीम अरुणाचल के बारे में सोचते हुए हम लोगों को काम करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से अभी हम लोग आने वाला दिनों में और भी इंटरेक्शंस विद इन द ट्राइब, हम लोग और भी कुछ एक्टिविटीज़ विद इन द वेरियस यूथ्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स
हम लोगों को आयोजन करना होगा। और आश्चर्य का बात यह है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, क्योंकि बाहर का दुनिया पूरा लॉकडाउन था, उसमें अरुणाचल का थोड़ा स्थिति अच्छा था ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो उसमें मैंने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को कहा कि अभी टूरिज़्म के लिए हम लोग बाहर स्टेट्स या बाहर दुनिया में तो जा नहीं सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस है, क्यों ना हमारे ही लोग, अरुणाचल के ही लोग विद इन द स्टेट में टूर करें। तो देखो अपना प्रदेश कार्यक्रम मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था, और जितने भी जो टूर ऑपरेटर्स लोगों को बुला के मैंने कहा कि अपने अपने जगह का लोगों को आप लोग लेके अरुणाचल में टूर कीजिए। आज मैं पूरा कॉन्फिडेंट का साथ में बोलता हूँ, यहाँ पे करीबन 300-400 यूथ लोग यहाँ पे जमा हुआ है। आप लोग पूरा अक्रॉस अरुणाचल कोई भी आदमी नहीं हुआ कि 25 डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल करने वाला, अगर कोई है तो हाथ खड़ा कीजिए। अरुणाचल इज सो बिग और इतना सुंदर है, अपना ही प्रदेश है, और हम लोग अगर ट्रेवल नहीं करेगा तो कौन ट्रेवल करेगा? एंड यू आर द फ्यूचर। मैं इसलिए आप लोगों को ये बात रख रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन अगर आपको ढूंढना है, सो विदाउट नोइंग द प्रॉब्लम आप सोल्यूशन कहाँ से निकालोगे? सो इसलिए आप लोग का जो वेकेशन होगा, अभी बहुत लोग तो फील्ड ट्रिप करके बाहर में घूमने का बहुत पहले से ही सिलसिला है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन मेरा ये भी निवेदन होगा, बाहर की दुनिया देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना प्रदेश में भी आप लोग छोटा छोटा, अभी यूनिवर्सिटी में तो सब जगह का लोग आते हैं, वहाँ पे अपना स्टूडेंट्स लोग आते हैं। तो मान लीजिए मैं तवांग से आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो अपना यहाँ का तिरप चांगलांग का मतलब 10-12 का एक ग्रुप बनाइए और हमको बोलिए कि हमको वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, हमारे लोग आपके वहाँ आ रहा है। तो हमारा जितने भी जो दोस्त है, फिर बाद में 10-12 का ग्रुप बना के फिर वहाँ हम लोग घूमने जाएंगे अपना गाँव में, गाँव के लोग, वहाँ के लोग कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं। सो इस प्रकार करके हम लोगों को जो विद इन द ट्राइब्स का जो एसिमुलेशंस जो होता है, बॉन्डेज, वो भी बढ़ जाएगा, और आप लोगों को भविष्य में उसका वो ट्राइब का किस प्रकार से किस प्रकार से सोचता है, क्या फीलिंग होता है, दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के इस प्लेटफॉर्म को लेके आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना अरुणाचल प्रदेश को आप देखिएगा, क्योंकि आप लोग जब ग्राउंड में जाके देखेंगे तो वहाँ का प्रॉब्लम्स को भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आने वाला दिनों में उसको एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशन भी तब आप लोगों को पता चलेगा। सो दिस इज़ वन इम्पोर्टेंट एजेंडा दैट आई थॉट आई मस्ट स्पेल आउट हियर। और दूसरा गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव्स में तो मैंने पिछले अभी एस मुख्यमंत्री बन के करीबन अभी 6 साल होने को जा रहा है, और बहुत सारा रिफॉर्म्स हमने ट्राई किया इस स्टेट में लेके आने के लिए। 2016 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आई मेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। उन्होंने कहा कि अरुणाचल में बहुत सारा स्ट्रेंथ है वहाँ पर, लेकिन आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको सबसे पहले रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है, तो अपना आप डेवलपमेंट अपना पटरी पे आके ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। सो उस प्रकार से बहुत सारा रिफॉर्म्स मैंने यहाँ पे किया है। ऑनरेबल स्पीकर साहब ने 1-2 का यहाँ पे जो जिक्र किया कि खास करके अरुणाचल प्रदेश में पॉलिटिकली, मैं अभी भी बोलता हूँ, वी आर नॉट मैच्योर्ड टू हैंडल फुल फ्लेजेड डेमोक्रेटिक स्टेट। आप लोग सोचता होगा कि सीएम साहब क्या बात कर रहा है। उस ज़माने में जब 1972 में जब यूटी था, उस वक्त का अगर प्लानिंग देखा जाए, अर्सवाइल 5 डिस्ट्रिक्ट था उसमें। उस ज़माने का प्लानिंग इतना बढ़िया हुआ करता था, और उस ज़माने में जैसे अभी शिक्षा मंत्री ने जो कहा कि स्कूल्स बहुत कम था उस ज़माने में, मगर दोज स्कूल्स वेयर परफेक्ट। आज देखो हमारा स्कूल्स कितना नंबर्स पहुंच गया, गवर्नमेंट स्कूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। वी हैव अराउंड आई थिंक मोर देन 3000 गवर्नमेंट स्कूल्स। आज लिटरेसी रेट जो बताया मिनिस्टर साहब ने, 2020 का जो रिपोर्ट है, वी हैव टच डाउन ऑलमोस्ट 83%। लिटरेसी रेट तो बढ़ गया, मगर क्वालिटी एजुकेशन कहाँ गया? सो देयर आर सर्टेन बिग क्वेश्चंस। अभी उस ज़माने में यूटी टाइम्स में स्कूल बहुत गिना चुना था, मगर वहाँ का जो प्रोडक्ट जो है, हमारा सोसाइटी में कोई लोग रिटायर्ड हो गया, कोई लोग का अभी इस दुनिया में रहा भी नहीं, तो उनका एजुकेशन इतना परफेक्ट था, इतना बढ़िया था। सो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे डेमोक्रेसी का आदत पड़ते गया, और 87 में जब
स्टेटहुड में कन्वर्ट हो गया है। यूटी से स्टेटहुड में 87 में जब कन्वर्ट हो गया, उस वक्त में तो मैं भी छोटा था, स्कूल में ही था, लेकिन हमको बताया गया है कि उस ज़माने का जो सीनियर्स, उस ज़माने का जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो अपना सीनियर्स लोग जो पढ़ता था, 87 में पूरा वो लोग यहाँ पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया, धरना किया, बोलता है कि हम लोगों को स्टेटहुड नहीं चाहिए, हम लोगों का स्टेट अभी मैच्योर नहीं हुआ है स्टेटहुड एडॉप्ट करने के लिए, हम लोगों को यूटी में ही रहना है बोल के काफ़ी डरना भी हुआ। मगर उस वक्त में जो भारत सरकार था कि राज्य सरकार का डिमांड ही नहीं है, उसको ज़बरदस्त स्टेटहुड थमा दिया। स्टेटहुड एक्चुअली देना था उनको वहाँ पे मिज़ोरम में, तो मिज़ोरम वाला तो बहुत पहले से ही एजुकेशन में एडवांस है, काफ़ी एडवांस सोसाइटी है, तो वो लोग का डिमांड, वो लोग तो प्रिपरेशन के साथ डिमांड किया पूरा, उन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स होना है, क्या नहीं होना है, पूरा पेपर तैयार किया उन लोगों का। तो भारत सरकार में साथ साथ फिर अरुणाचल को भी साथ में दे दिया। तो इसीलिए हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जितने भी जो अभी हम लोग का एस एन ट्राइबल जो हक होना चाहिए वो भी मिसिंग है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे यहाँ का लोग डिमांड ही नहीं किया, भारत सरकार ने अचानक थोप दिया। सो तब से लेके जो प्लानिंग प्रोसेस जो है, क्योंकि एजुकेटेड नहीं था वहाँ पे हमारा सभी समाज में, तो मैं किसी को गलती में नहीं ठहरा रहा हूँ, किसी भी इंडिविजुअल लीडर या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। मगर जो परिस्थिति में उन लोगों को जो ठीक समझा वो करते गया, तो इस प्रकार करके अभी थोड़ा सा होश पोश काफ़ी हो गया था। तो मैं टेक ओवर करने के बाद मैंने कहा कि इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों का बीच में जो हार्ट बर्निंग हो गया, खास करके यूथ्स में जो परेशानी, दैट प्रॉब्लम जो होता है, इट विल बिकम वेरी, बाद में जाके बहुत एक डिस्ट्रक्टिव एक स्टेट होने का हमको नज़र आ रहा है। तो रिफॉर्म्स करना, जैसे ऑनरेबल पीएम साहब ने कहा है रिफॉर्म्स कीजिए, तो मैं पूरा रिफॉर्म्स में हमने पूरा ध्यान दिया, और रिक्रूटमेंट में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को लेके आया, इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को पूरा हमने स्टैंडिंग करते हुए पूरा ट्रांसपेरेंसी, सब जगह में ट्रांसपेरेंसी कर दिया। जब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जब मैंने जिक्र किया अपना कॉलीग्स लोगों को, तो काफ़ी परेशान तो था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में पुराना जो प्रैक्टिस जो चल के आया है, उसमें तो पता है कि इलेक्शन प्रोसेस में एस एन कैंडिडेट जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, XYZ जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो लोग कैंपेन करते हैं तो नौकरी का सौदा करते हैं वो लोग। पब्लिक भी ऐसा है, क्योंकि हमारे परिवार में 10 वोट या 15 वोट जो भी है, हमको इतना नौकरी चाहिए, पहले से ही ऐसे सिस्टम था। तो ये सिस्टम जो है कब तक कंटिन्यू करके हम लोग लेके जा पाएगा। आज आप लोग यहाँ पे अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के होगा, कोई लोग अच्छा फैमिली बैकग्राउंड का होगा, कोई लोग गरीब फैमिली बैकग्राउंड का होगा। जो गरीब फैमिली का जो लोग है, बेचारा माँ पिताजी पेरेंट्स इतना मेहनत करके अपना बच्चा को स्कूल भेजता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये एक आशा रख के कि वापस आके अपना बच्चा एक ऑफिसर बनेगा, एक सरकारी कर्मचारी बनेगा। मगर उस वक्त में अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार के लोगों को, गरीब लोगों के लिए जगह नहीं था। क्यों जगह नहीं था? क्योंकि सिस्टम ऐसा था कि उस वक्त में तो पॉलिटिकल दबदबा, मनी पावर और ऑफिसर्स लोग हैं, उन लोगों का दबदबा, उन्हीं लोगों को नौकरी मिलता जो चीफ मिनिस्टर को जानता है, मिनिस्टर को जानता है, MLA को जानता है, ऑफिसर्स को जानता है, या जिसका पास पैसा है। तो लोगों को जस्टिस कहाँ मिल रहा है यहाँ पे? तो मैंने विद फुल पॉलिटिकल विल मैंने कहा नाउ नथिंग डूइंग, ये अरुणाचल का फ्यूचर के बारे में बात है। अभी दुनिया बदल रहा है, अरुणाचल शुड ऑल्सो चेंज, वी शुड ऑल्सो ट्रांसफॉर्म। तो जाके 2017 में मैंने इस एक्ट को लेके असेंबली में लेके हमने पास कराया। अगर चाहता तो मैं सिर्फ कैबिनेट में ही बैठ के इसको हम नोटिफिकेशन कर सकता, मगर अरुणाचल का भविष्य को देखते हुए मैंने जानबूझकर इसी सदन में लेके हमने पास कराया, ताकि आने वाला XYZ जो भी चीफ मिनिस्टर हो या जो भी ABC का जो पार्टी है, वो लोग इस एक्ट को छेड़छाड़ कर ना सके। जो भी अभी छेड़छाड़ करना है उस एक्ट को वापस फिर इसी सदन में असेंबली में ही लेके चर्चा करना पड़ेगा। सो आज मैं जहाँ भी टूर में जाता हूँ, अभी ऑफिसर्स पब्लिक सर्विस कमीशन का तरफ से अभी गरीब से गरीब लोग अभी ऑफिसर्स क्लास 1 ऑफिसर्स मिल के आते हैं, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में पूरा अच्छे लोग मिल के आते हैं। तो हमको मिलने के लिए आते हैं वो लोग डिस्ट्रिक्ट में, कहते हैं सर आपकी वजह से हम लोगों को नौकरी सेवा करने का मौका मिला है। अब ये ट्रेंड जो है, अभी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का जो वर्कफोर्स है 5 से 10 साल में आप लोग देखिएगा कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस भी पूरा बदल जाएगा।
क्योंकि उस वक्त में नया लोड आते जाएगा, पुराने वाला लोग रिटायर होते चला जाएगा, नया लोग आते जाएगा। वर्कफोर्स आप लोग देखना कि आने वाला 5-10 साल में पूरा चेंज हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छा एक गवर्नेंस हम लोग इस राज्य में चला पाएगा। सो इस प्रकार से बहुत सारा रिफॉर्म्स इन ऑल द सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टर में भी ड्यू टू कोविड आप सबको पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CSC में हम लोग काम कर रहा है। एजुकेशन में मैंने लास्ट ईयर कहा था कि इट विल बी द ईयर ऑफ एजुकेशन। फिर सब लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि एक साल में आप कैसे एजुकेशन को ठीक किया है। ईयर ऑफ एजुकेशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि एजुकेशन वाज ए नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट, और एजुकेशन ही हम लोगों का फाउंडेशन है। जब राज्य का एक मुख्यमंत्री बनने के बाद तो पूरा अरुणाचल प्रदेश में वापस फिर एजुकेशन को रीथिंक करने में मजबूर हो गया। अभी सब जगह में एजुकेशन का चर्चा हो रहा है। काफ़ी रिफॉर्म्स हम अरुणाचल प्रदेश में जो जीरो एनरोलमेंट स्कूल को मैंने शट डाउन करने के लिए बोला है, और डिपार्टमेंट ने एक साल के अंतर्गत में दे हैव क्लोज्ड मोर देन 400 स्कूल्स जीरो एनरोलमेंट। आप लोग सोचिए कि जीरो एनरोलमेंट मतलब तब से मतलब चल रहा था वहाँ पे। टीचर वहाँ पे स्टूडेंट नहीं है मगर टीचर का पोस्टिंग है वहाँ पे, टीचर आराम से बैठा हुआ है। सो इस तरह का दैट अप्रोच, सबको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोग अच्छे से निभाए, आई बीइंग एन चीफ मिनिस्टर और हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, MLAs और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या अपना बिजनेसमैन या जो भी अपना पब्लिक भी, वी शुड बी ऑल ऑनेस्ट टू आवर वर्क। तब जाके ये प्रदेश में एक डेवलपमेंट का लहर एक अच्छा दिशा में चल पाएगा। यहाँ पे मैं देखा अरुणाचल प्रदेश का जो थॉट प्रोसेस जो है, हर एक चीज़ गवर्नमेंट, हर एक चीज़ गवर्नमेंट, ये नहीं होता है गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो ये नहीं होता है गवर्नमेंट क्या कर रहा है। गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए, दैट्स वेरी गुड, गवर्नमेंट को तो करना ही करना है क्वेश्चन, लेकिन साथ साथ फिर दूसरा डायनामिक्स भी देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, बाकी लोग क्या कर रहा है, इसमें जनता का अप्रोच किस प्रकार से है। सिर्फ गवर्नमेंट अकेला को ही क्वेश्चन करते रहेगा तो ये सिलसिला तो नेवर एंडिंग है। डेमोक्रेसी है, क्वेश्चन करना भी चाहिए। तो कहने का मतलब हम लोग जिस पोजीशन में है, हम लोगों को अच्छा से रिस्पॉन्सिबल का साथ में, ईमानदारी का साथ में, अकाउंटेबल का साथ में हम लोगों को योगदान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग अगर अपना स्ट्रेंथ के बारे में बात करें इस प्रदेश में, वी आर ऑल ब्लेस्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग बहुत किस्मत वाला लोग हैं कि इतना अच्छा प्रदेश, सुंदर प्रदेश में हम लोगों को जन्म मिला हुआ है। हम लोग सिर्फ परेशानी हो के अपना चैलेंजेस के बारे में ही बात करता रहता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम लोगों को नज़र नहीं आता कि हमारे पास क्या रिसोर्सेस है इस प्रदेश में। ऐसा रिसोर्सफुल प्रदेश तो कंट्री में कहीं भी नहीं है। एक बार हम लोगों का जो मेजर जो सिनेरियो होता है गवर्नमेंट की ओर से, कम्युनिकेशन सेक्टर, वो अगर ठीक हो जाए तो इसका बाद स्काई इज द लिमिट। यहाँ पे इतना पोटेंशियल है। यहाँ पे आप चाहे हाइड्रो पावर का बात करें, आप सब लोग जानता है, टूरिज्म क्षेत्र में देखिए, आप सबको पता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में देखिए, इतना यहाँ पे अभी ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन साहब ने भी कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिया। तो वी हैव ट्रेमेंडस फ्यूचर, और हमारा माइनिंग सेक्टर में भी इतना फ्यूचर है यहाँ पे। तो धीरे धीरे, लेकिन अभी वी आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, क्योंकि अभी जो बजट, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से हम बजट बनाते आया, तो अरुणाचल का परफॉर्मेंस जो होता है अपना स्टेट का रेवेन्यू, उसके ऊपर भी काफ़ी आधार होता है। तो ओवर द ईयर्स आई हैव सीन दैट इंटरनल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग नाउ, दैट्स अ वेरी गुड साइन। अपना इंटरनल रिसोर्सेज अभी साल भर में बढ़ते जा रहा है वो, दैट मीन्स हम लोगों का यहाँ पे बिजनेस हो गया, कुछ मतलब अच्छा चीज़ हो रहा है, तब जाके इनकम हो रहा है अपना स्टेट का भी। आने वाला दिनों में हम सब का टारगेट ये होना है कि एज वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज के इस डिस्कशन में आप लोग ये विजुलाइज करना है कि एज एन अरुणाचली हम लोग किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करना चाहिए अरुणाचल का ग्रोथ में, एंड हाउ डू यू फोरसी आफ्टर 25 ईयर्स व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। आज से 25 साल बाद जब अपना कंट्री 100 ईयर्स का सेलिब्रेशन करेगा, सेंटिनरी सेलिब्रेशन होगा, उस वक्त में अरुणाचल जो है किस लेवल में आप लोग देखना चाहता है, और उसके लिए हम लोग अभी से क्या क्या करना है, उसका आइडियाज़ के ऊपर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का इस डिस्कशन में ज़रूर चर्चा करें। और आज थोड़ी देर पहले अपना जो कमिटी का माध्यम से एक वेबसाइट लॉन्च करने का भी मौका मिला है।
ड्रग एब्यूज़ वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करके एंड रोड टू रिकवरी के बारे में अभी आप लोगों का एक डेमो भी यहाँ पे दिखाया। तो अरुणाचल का दूसरा जो चैलेंजिंग है आप सबको भी पता है, और आपका शायद एक दो जान पहचान लोग भी शायद उस जाल में ट्रैप हो गया होगा, एंड दैट इज़ ड्रग एब्यूज़। ये हमारा राज्य का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इसको एड्रेस करने के लिए तो वी ऑल शुड बी वन, वी ऑल शुड बी एज एन टीम, उसको एक साथ जुट होकर हम लोगों को लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। सरकार की ओर से ऑलरेडी वी हैव पास द अरुणाचल प्रदेश साइको एक्टिव सब्सटेंस पॉलिसी 2021। हम लोग ने ऑलरेडी सरकार की ओर से पास कर रखा है। ब्रॉडली इसमें 3 पिलर्स का आधार पर हम लोग ने पास किया है, दैट इज़ सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन एंड हार्म रिडक्शन। तो ये 3 पिलर का आधार पर इस पॉलिसी को हम लोग ने एडॉप्ट किया हुआ है। आफ्टर स्टेटहुड डे 21 को ही मैं इस मीटिंग का चेयर कर रहा हूँ। तो इस ड्रग्स पॉलिसी जो है, ये ड्रग्स मीनेंस जो है काफ़ी सीरियस है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों का भविष्य आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं का वहीं ख़त्म हो रहा है। तो बाद में अरुणाचल में काफ़ी बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा अगर इस ड्रग्स एब्यूज़ को हम लोग अच्छे से टैकल नहीं करेगा। तो बोलने के लिए तो वैसे बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर आई विल लीव द रेस्ट ऑन you all to have a very good discussion, and my best wishes to each and every one of you. And with this I thank honorable speaker once again, और अपना साकेत कुशवाहा साहब, ऑनरेबल अपना वाइस चांसलर RGU का, जो इतना अच्छा ओकेजन पर हमको यहाँ पे याद किया है। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय अरुणाचल। Thank you so much, sir, for your encouraging words towards the youth and student community. And definitely, we all should uphold the concept of Pan Arunachal. So now we are approaching towards the end of this inaugural session. So to formally end this session, I would like to invite Dr. N.T. Rikam, Registrar, Rajiv Gandhi University, to please pronounce the word of thanks for us. Good morning, ladies and gentlemen. Rajiv Gandhi University is privileged to collaborate the organizing committee of Golden Jubilee celebrations of naming the state Arunachal Pradesh with the status of Union Territory way back on 20th January 1972. In fact, I must thank the government of Arunachal Pradesh for giving us an opportunity to organize these programs. We had a panel discussion day before yesterday on 17th of this month, where we invited the renowned leaders of the state who actually witnessed the beats of the development of Arunachal Pradesh, the likes of R.K. Krime, Ninong Iring, and young MLA Haing Mangpi, where our honorable speaker of State Legislative Assembly was the chief guest of the program. So in sequence to that, today we are organizing this symposium. This is dedicated to the youth of the state, the students of the state. So this is why we have invited exclusively the students of the university and colleges within Capital Complex. The topic, as we know, is development and change in Arunachal Pradesh in 50 years, youth perspective on history and future. On this occasion, we are very delighted to have our beloved Chief Minister, Honorable Chief Minister Shri Pema Kanduji, as chief guest
I must express my heartfelt gratitude and thankfulness to you for your valuable presence and for showering your words of wisdom on the young minds gathered here today. It is also our immense pleasure to have amidst us Engineer Taba Tederji, who holds the important ministerial position of education, which is directly concerned with the human resource development in the state. Sir, your presence here has added value to this program since it is dedicated to the youth of the state, particularly the students. Your encouraging words will definitely change the mindset of the students and drive them towards positivity in all walks of life. I must acknowledge the wisdom and the leadership of Sri Pasang Dorji Sonaji, Honorable Speaker of 7th Legislative Assembly, Arunachal Pradesh, and who is also the chairman of 50 years Celebration Committee of Arunachal Pradesh. Sir, you have exhibited immense zeal and enthusiasm to carry forward the events in different parts of the state at different scales, right from its opening day at Jiro, headquarters of Lower Subansiri district, on 20th January 2022, to its culmination scheduled at the state capital here on 20th February 2022. My thanks is due to Professor Saket Kushwaha, Honorable Vice Chancellor, Rajiv Gandhi University, for guiding us continuously in organizing such events from time to time. He is an inspiration for all of us to dedicate ourselves untiringly to our duty in different capacities. I thank our Honorable MLA, Kento Rinaji. I could see Mr. Gumjum Haider, then a security advisor to state government, Major General Mohanty ji, all other invitees, and a distinguished panel of experts on the symposium who are drawn from young academicians of university and colleges and also from media circles. It is my firm belief that they will definitely ignite the minds of the young people to do something positive, meaningful, and constructive for the growth and development of Arunachal Pradesh in the years to come. I extend my thankfulness to all the participants, particularly the students, the youth drawn from different institutions and organizations for their active participation in the program. Last but not the least, I must extend my thanks to the organizing committee, both at the state level as well as the team from Rajiv Gandhi University headed by Professor Sumpum Tanjang, and of course our dear all-rounder, I can say, Miss Moir Riba, who is collaborating or actually looking after at state level as well as at Rajiv Gandhi University in organizing this series of events on the auspicious occasion of Golden Jubilee years of rechristening Arunachal Pradesh from Nepal. I thank media friends for your valuable coverage of the program,
With this, I extend my best wishes to the young friends for your deliberations that is going to actually take place just after this program. Thank you very much. Jai Hind, Jai Arunachal. बहुत बहुत धन्यवाद रिकाम सर। और इस प्रकार हमारा ये आज का उद्घाटन समारोह समाप्त होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और साथ ही जितने भी दर्शक हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए जो समय निकाला है वो बहुत ही मूल्यवान है, और ख़ासकर हम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम युवा पीढ़ी, आपने खुद कहा कि हम आने वाली ये जनरेशन है और हमारे कंधे पे ये भार हमारे प्रदेश के लिए आएगा। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी लाइट रिफ़्रेशमेंट का बाहर पे थोड़ा सा मैनेजमेंट किया है, तो आप लोग लाइट रिफ़्रेशमेंट फटाफट से ले लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो आज का जो मेन कार्यक्रम है यानी कि जो पैनल डिस्कशन है वो कुछ ही समय बाद शुरू होगा। तो जस्ट 5 मिनट का रिफ़्रेशमेंट है। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारा पैनल डिस्कशन कुछ ही समय में शुरू होगा, तो आप लोग जल्दी से वापस हमारे बीच आ जाइएगा, बिकॉज़ हमारे बीच जितने भी पैनल डिस्कशन के लिए जिनको आमंत्रित किया गया है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से है, तो आप लोगों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए। स्टूडेंट्स बैक डोर से भी जा सकते हैं और एक डोर पीछे है, आप लोग पीछे से जा सकते हैं। एक बार हमको टॉपिक को दिखाता हूँ। हम शॉर्ट से बोलिए, क्योंकि ज़्यादा किसी का ज़्यादा नहीं लेता हूँ, किसी के ऑकवर्ड से लंबा बोलने से ऑकवर्ड हो जाएगा। ओके,
Check, check, hello, check. Hello, check. Check, hello, check, check. Check, hello, 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 check, 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 hello, check. Check, hello, 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 check, check, check.
check, check, hello, check. ये switch है इसका ना. हमारे ये पैनल डिस्कशन अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, तो मैं अनुरोध करती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और साथ में इस पैनल डिस्कशन के लिए जो आए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप लोग जल्द से जल्द अपना स्थान ले लें, क्योंकि इसके बाद हमारा और एक कार्यक्रम रहेगा, लेकिन ये पैनल डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबसे हेलो, विभिन्न महाविद्यालय से आए विद्यार्थियों, आप सबसे मैं फिर से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपके फ्रेंड्स अगर बाहर है तो उन्हें जल्द से जल्द इस प्रांगण में बुला लीजिए, क्योंकि हम कुछ ही क्षणों में अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। ये पैनल डिस्कशन कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप जल्द से जल्द अपना स्थान ले लें, और जितने भी दर्शक और इस कार्यक्रम को जो देखने आए, आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर जब पैनल डिस्कशन चल रहा होगा, यानी कि कार्यक्रम जब शुरू हो जाएगा, तो आप लोग अपना
फ़ोन यानी कि मोबाइल या तो साइलेंस मोड पे कर दीजिए या फिर स्विच ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो डिस्कशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो हमारे बीच विद्वान जन हैं वो लोग आए हैं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने फ्रेंड्स को जल्द से जल्द बुला लीजिए। हम बिना देरी के ये इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। लिकर रहते आप जहाँ कहीं भी हो, इस तरफ आ जाइए मेरे राइट हैंड साइड में। लिकर रहते अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो मेरे राइट हैंड साइड में आ जाइए, आपसे कोई मिलना चाहता है। जैसे कि आपको पता है, आपके सामने ही जो दरवाज़ा है उसके थोड़े आगे में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अभी तक, आपको आफ्टर पैनल डिस्कशन के बाद में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे भी आपको यहाँ की उपस्थिति देनी है और इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक दिन में आप अपना नाम ज़रूर रजिस्टर्ड कराइएगा। बिना रजिस्टर्ड कराए आप लोग यहाँ से ना जाइए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। आप सबसे मैं फिर से दरख्वास्त करती हूँ, अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करके जाइएगा।
Hello, check. Hello, let's begin the session. So, ladies and gentlemen, I welcome you once again to the panel discussion session. We have many young and eminent scholars, academicians, and experts drawn from various fields who will have an insightful take on the issues and challenges of some of the most pressing demand of today. So, to begin with, for the first panelist for today is an award-winning author and a prominent figure of Hindi literature of Arunachal Pradesh. He would be deliberating on the topic Literature of Arunachal Pradesh. Please welcome Dr. Taro Sindik, Assistant Professor, Department of Hindi, Dera Natung College, Itanagar. For that, I request Ms. Moya Riba, faculty member of Rajiv Gandhi University and also the convener of Literary and Sports event 50 Years Golden Jubilee Celebration to facilitate our panelists. Thank you so much, sir. I welcome you to the panel. For the next panelist, she is an academician who have numbers of papers published in many reputed journals to her name. She would be sharing insightful information on the topic Literatures of Arunachal Pradesh. She is Dr. Doyer Ate, Assistant Professor of English, Rajiv Gandhi University. Ma'am, I welcome you to the panel. Again, Moya Riba ma'am will be felicitating our panelists. Ma'am, we welcome you to the panel. Next, we have a man of science who will be talking on the topic Regaining Self-Sufficiency in Agriculture, Post-COVID Realization. He is Dr. Pema Khandu Goiba, Department of Food and Technology, Rajiv Gandhi University. The next panelist, we have a person with academic records who have been awarded with Chancellor's Gold Medal for both UG and PG. She will be having her take on the topic Adopting Sustainable Arunachal Biodiversity and Sustenance. Please welcome Ms. Ajum Ingo, Department of Botany, Dera Natung Government College, Itanagar. Thank you so much, ma'am, and welcome to the panel. The next panelist, we have a man from the field of law. He is from Guwahati High Court Permanent Branch. He is Mr. Advocate Rekan Ingo. His topic is Students' Politics in Arunachal Pradesh, Their Role and Impact.
Thank you so much, sir, and welcome to the panel. Next, we have Mrs. Zilfa Modi. She is from the Department of AITS, Rajiv Gandhi University. She would be sharing her expertise with us on the topic, retracing roots in traditional practice amidst the woke culture. Thank you, ma'am, and welcome to the panel. So for the final panelists of this session, we have a journalist working with the Downlit Post. He is a frequent contributor to reputed dailies of the country. He would be taking on the topic of social media versus mass media, transition and future perspective. Thank you so much, sir, and welcome to the panel. Now, for the most important part, we have a moderator in our very own, Professor Sumpam Tangjang, Dean, Faculty of Life Science and Food and Agriculture Science. Sir, please welcome to the panel. Thank you so much, sir. You may please occupy the chair provided for you. With this, may I now request our moderator for this discussion, Professor Sumpam Tangjang, to please take over the discussion. Sir. So a very good afternoon to all of you. I welcome you all once again to this very important discussion, that is panel discussion. We have altogether 7 panelists here, and they will be talking on host of important topics. The panelists will be given 10 minutes each for sharing their views. So I'm confident you all will find new ideas after listening to their sharing their ideas, then fresh energy, and I'm sure you will find enriched with knowledge after the completion of the overall deliberation. So without taking much ado, I would like to request the first panelist, Ms. Ajum Bagang, to initiate the discussion, and she will be speaking on adopting sustainable Arunachal, biodiversity and sustenance. Over to you, Ajum. Thank you, sir. So, a very good afternoon to one and all. So, my talk will be on towards sustainable Arunachal, biodiversity and sustenance. So, before jumping over to anything about sustainable Arunachal, let us first see what biodiversity is. We have to go back and look. So biodiversity is derived from 2 words, that is bio means life and diversity means the variations. So the variations in life
be it of microbes, be it of plants, be it of animals, together they are called they are forming the component of biodiversity. So, when we look at biodiversity, we can find it at three different levels. When the variation is within within the same species, between the genes of the same species, then it is genetic diversity, biodiversity. Then, when it is between species, means interspecific or interspecies, then it is species diversity. And when the diversity is between different habitats or communities of a given large geographical area, then it is ecosystem diversity. So these are the three levels of biodiversity. And then now we know what biodiversity is and what are the levels of biodiversity and what are the components. Okay, that was the plant component, right from the lower plants and the higher plants, and the animal component, that was the comprising of your mammals, reptiles, arthropods, even insects, butterflies and all, and the microbial this component comprised of your fungi, bacteria, virus, protists and protozoans. So when we are discussing about this diversity, why it's so important, why there's the need to conserve it. Why there's need to conserve it? Yes, that is a question that comes in our mind. What's the need? So, because even if we don't recognize it, but we are dependent upon the biodiversity for our food, isn't it? That means for the services and also for the services that they provide. Services in the sense, what? Ecological services. The oxygen that we are breathing, isn't it? The oxygen that we are breathing right now, that is the reason for our survival. This biodiversity provides us biodiversity provides us that that oxygen. Not only that, it decomposes the dead and decaying matters, thereby adding nutrient to the soil, making our land more fertile. And then also certain other services like the nutrient cycling, even the fresh water that you get. Okay, so these all, because of these all services, indirect or direct services that we get from this biodiversity in the form of be it food or we use it for like economic gain, and then also for other purposes like aesthetic values of it, of biodiversity. Right, isn't it? So the purpose we go and visit Zero Plateau or Mechukas for that reason, or even Tawang. Why? Because we get to see different vegetation there. The diversity is different. The biodiversity that we get to see there is different. The vegetation that we get to see is different from what we get to see here. So that is giving us the aesthetic value of biodiversity. So we are not recognizing it. So there is a need to recognize it, and so we have to preserve or conserve or sustain this biodiversity. Now, coming back to Arunachal. Okay, so when we talk about biodiversity of Arunachal, many a times we feel proud to say that our state is one of the largest of the northeastern state with 83,743 square kilometers of area, geographical area. So we can proudly boast about it. And even the forest cover is up to 80%, approximately 80% of this large area is covered with this virgin forest. So we boast about it, isn't it? And and we have another thing to boast about is that our state is one of the top 12 biodiversity hotspot in the world. Out of the 34, it is coming in the one of the top 12. So again, we boast about it. Then the question now is, for how long? Okay, for how long we can boast about it? Because if we look at the recent reports, which says that every year
about 276 kilometers square, okay, kilometers square of this forest, virgin forest is being lost every year. There is something we should be concerned about, isn't it? This is something that we should be concerned about. In this rate, if this continues to go on, then the day is not far when we will be crying, or the very fabric of our existence will be at stake, isn't it? So this is something we have to ponder upon. Then, what are the ways, or how are we contributing, or how are we posing a threat to biodiversity? That comes in our mind, isn't it? When we are saying that we should save, conserve this biodiversity or sustain this biodiversity, then how are we posing threat? So, when we question ourselves that how are we posing threat, or then we can simply put it in some points, or in some simple 4 points. Like, firstly, we are destructing the natural habitat of biodiversity, the natural habitat. By what? By deforestation, and then by habitat destruction, by urbanization, by construction of these developmental infrastructures, and so on and on. So we are disturbing this their natural habitat. And then again, we are also exploiting them in a sense that we are exploiting the natural resources, okay, on the verge that they cannot replenish themselves. So this is also a question that we have to think about. We have to question on ourselves, put a question on ourselves. Also, we are there is a rampant, if you can look around in and around this capital region, ICR, there is a rampant earth cutting going on. For what? For real estate, isn't it? This is a recent concept. Only 10 years back, it has come out in this, especially in this capital area. So then again, some of the species we have lost because of our what? Because of hunting. We have hunted down some of the species to extinction. You won't believe me if I say that when 20 to 30 or 30 years back, when this Itanagar area, the people then they could not go out of their house, or they preferred to stay inside their house at the night time, because the wolves, these fox will be howling, crying at night. So, but just reason. No, this human habitation, urbanization, and all have resulted it. Then, okay, and also knowingly, unknowingly, people most of the time, because of our actions, we introduce some invasive species into the environment. Invasive species. So the invasive species, they are destroying the native species. Okay, native species. So they pose a threat to the native species. Okay, then coming to how can we then, okay, we know that these are the ways that we are, wrong ways that we are adopting. How can we sustain this, our state, Arunachal? How can we sustain the biodiversity of our state? Coming to this point, if we have to discuss, then I think that since our state is actually having what? It's not only rich in biodiversity, but also it's rich in culture. Like we have 26 major tribes, 110 sub-tribes. Or if you look around, as our Honorable Chief Minister has just said, if you look around, we are so diverse, we are so rich in culture also, not only in biodiversity. So each of our these traditional indigenous people have our own traditional knowledge system. So, and time and again, when it has been proved that the traditional system of restoration, of conservation is very effective.
like your many tribes like Nishi, Apatani, Serdukpens, Akas, and all, they are having this system of conserving their some area of the forest in the form of sacred groves, sacred forest, sacred lakes, sacred streams, where they prohibit the normal entry of people. So, in a way, they are helping in preserving this biodiversity or conserving this biodiversity. A beautiful example I can say is that this tribe, okay, when I had this opportunity, when 7 years back when I was a scholar, I and my colleague, female colleague, she was also a scholar. As a scholars, young and enthusiastic scholars, we went to Kamba, outskirts of Kamba forest, just to collect some specimens. Then there the local guide told us that, no, you don't have to go there. Okay, you don't have to go near that wild banana grove. Okay, that was grove, and they had this belief that they should not go there. Especially the women folks, the ladies, they should not go there. If they go there or even touches that banana, then they are forbidden, that they will become barren. Means they won't have the offsprings. But I don't know how much this omen, bad omen that they believe had to do or to scare the people away, but then I am very much confident that yes, in a way they are preserving that rare wild banana species. Okay, so 7 years now, fast forward, both of me and my colleague, both of us are having beautiful children. Okay, but in a way, whatever their belief are, whatever their customs are, but in a way, they are preserving it, that wild banana. So like that, the people, in Jiro, Apatani people also have this sacred forest area. In different regions, the people have this sacred forest area, the forest area. So then, these are the ways. And then, so why I'm talking about this is that it is time that we create awareness among ourselves, awareness about what? About the need to conserve this biodiversity. And how it will be done? By spread of words, okay, from mouth to mouth. As we are discussing in this symposium, as we are exchanging ideas, don't limit it here itself. Go, while you go back, talk to your friends, talk to your parents, talk to your siblings about this. So that is the most effective way this awareness can be created. Then secondly, we have to go back and look at our roots, because our ancestors, our forefathers, though they did not see the door of school, though they could not get the formal education, but then they got themselves educated in the arms of nature. And their indigenous knowledge, in their indigenous ways of restoration or conservation, of mitigation and all is very effective. So we have to take their help. And that is the point. And there are many more things which I wanted to speak, but then since time constraint is there, so I would just conclude that it is time that we have to introspect our actions, what we are doing, though it may seem very insignificant, okay, very insignificant, but like the drop of water, our single action creates a ripple, okay, in the ecosystem. Drop of water, when it falls down, it creates ripple. Like that, our single action creates ripple in the ecosystem. And collectively, they will determine what our future will face. What our action will determine whether we are going to pass on these resources that we are enjoying today to our future generations. So there is a need to conserve it. And however, how much or however we try to deny that, yes, we are not changing, or we will remain as same, or we will just be the same,
it is of no work, because change is imminent, okay? Change is imminent. It is going to take place. So we have to care about what change we are going to bring in future. What change we are going to bring in future. So our action now determines tomorrow's future. So we have to take responsible for it. We should be introspecting us, and we should be questioning ourselves that what we as a superior race, so-called superior race, are doing. Are we not supposed to contribute or play our part in conserving these resources that we are enjoying for future generation? Are we not supposed to do that? How much we are doing? Are we doing enough? That is the question that I leave to you. Thank you. Thank you very much, Ms. Bagang, for sharing your views on biodiversity and its sustenance. And you have touched almost all, from microbes to floras to faunas, and the conservation. And you also have talked about the developmental activities taking place in our state as well as around the globe, and how these developmental activities impact the biodiversity laws and all. So the audience will be given a chance to interact with the panelists after the completion of all the panelists. So I would like to request our panelists to stick on your time, that is a given time, that is 10 minutes each to all of you. So the next, may I request Ms. Jilfa Modi, Assistant Professor, Arunachal Institute of Tribal Studies, Rajiv Gandhi University. She would be talking on retracing roots in traditional practices amidst the woke culture. Over to you, ma'am. Thank you, Sumbam sir. I'll be speaking from here. I'm not in the habit of, talking to my students in the class sitting. Since the pandemic, I haven't had the opportunity to talk to a crowd like this. So, yay! Thank you. Thank you for giving me the chance, organizers, state government, and the audience who are here. So my topic is retracing roots in traditional practices amidst the woke culture. Wow, it's quite a long topic. This is what I thought when I was asked to speak on this. Are you guys familiar with the term woke culture? This is what I expected, because I myself, I was not very sure of woke culture. I've heard this, used this in, casual terms, but not really, as a academic topic to discuss, So woke, before I begin my talk, I think it's, because the whole talk is anchored on this, you have Google, you can Google now and see. But woke culture, bottom line, is this cultural tradition that is now widespread, but emerged in the West with ideas about, marginalization, that a certain section in a society feeling marginalized, and this feeling of marginality, coming out as a political voice that, we are being marginalized, we also want to be treated as an equal. So these are usually, what frames woke culture, okay? So traditional practices and woke culture and Arunachal. So these are three different things that I have to link, and I want you all here also to think about. Do we in Arunachal, in these 50 years, think or have we integrated with the woke tradition that has been ongoing elsewhere in the world? Have we, asked ourselves that are we marginalized people? Is there any form of egalitarian practice in our society? Have we ever asked this to ourselves? Well, many of you who
who must have, packed your bags, left for DU or Bangalore or elsewhere, you must have, often, I myself have faced this, momo, chocho, chinky, henten, all sorts of words. Then there we realize, we think, we've never really thought of ourselves as a marginalized section, but here I am, There may be questions about, as a marginalized citizen in India is felt at an everyday level. But do people in Arunachal really feel that? I don't have the answer, but I would like to share how I see it. Okay? In traditional practices, especially in the context of traditional practices, are we beginning to include ideas of, in egalitarianness or inequality in our traditional society? So let's say, for example, tribal society, हम लोग बोलते हैं ना, tribal society क्या है? What is it made of? Immediately what appears to us is clan society, है कि नहीं? ये clan, वो clan, ये lineage, हर time picnic जाते हैं, हर time lottery कराते हैं, है कि नहीं? ये festival, वो festival. That is everyday clan that we live, na? That is our clan culture, right? So in our clan society, do you see or do you experience people or young people like you raising questions of inequality, of being marginalized? Have you ever raised that? What I did once, because there was this Solung celebration somewhere, and then I was asked, Jao Bartan Thali Dulao. And everybody, all my friends are decked up, lipstick, makeup, they want to, take nice pictures. But what to do? Here we are, Bartan Thali Maso. Really, that has happened. And then there are other guys, friends, they're all suited, decked up, and then a chief guest is coming, they're standing there taking photos, taking VIP, sitting on the front seat. And then there we are at the back, Bartan Tali Dulao, Aag Lagao, Mug nahi hai, Apong Dalo, Bato. This is on a daily level. I mean, this is every day. This is not something extraordinary that I experience or many of you may have experienced. But somewhere there in my heart, I was thinking, why is it that especially me as a woman, as a girl, why do we have to do this? And why is the opportunity to be the public face of a community given to a certain section of the society? Why is the burden of cleaning and doing the work at the backstage given to a certain section of the society? These are things that I thought, but maybe never put it out in a political, voice. So I am sure there are many Bartan Thali Mazne wala who must have felt, something while they were they must have felt this, but has it ever come out as a political voice that, look, this is what we are facing? Isn't this inequality? It is accepted because it is traditional practice. Yes, we respect our tradition. That is why we are a tribal society. But can we come out of it to become an egalitarian society? Can we ever come out of it? So, to a political level, many women have worked, for many days and nights, years, and come up with this bill that one of the ways or one of the reasons why tribal women in Arunachal are being marginalized, it's because they do not have the right to private property. They do not have the right to ownership of land. Because the idea of tribal culture itself is embarked, it is hooked on a patriarchal setup. है कि नहीं? It's only about men. Tribal purity is मतलब बाहर शादी करने से लड़की को मतलब नॉन ट्राइबल हो जाता है.
But when a tribal man marries a non-tribal woman, but their children are, it's not a question about purity about their children, ना? उस दिन आरजीयू में हमारा स्टूडेंट यूनियन लोग बोला है, Apsu is fighting, we are fighting for Arunachal, fighting for purity of tribal, tribal identity. But what is this based on? What is the purity of tribal identity based on? Blood? Or only the title? टाइटल तो नरेंद्र मोदी का भी मोदी है ना, मेरा भी मोदी है, सिल्फा मोदी. So what is it based on? आप लोग सोच के देखो. So, and then the reaction from our community. Just because women were saying कि हाँ, लड़की लोग को भी लैंड ओनरशिप ओन करने का राइट दो, हल्ला हो जाता है. Let's rape this women. शर्म नहीं है, उन लोगों का प्रॉपर्टी कहाँ है, जला देंगे. ट्रोल करते हैं. As if they have not eaten food from, cooked by women. So, are we as a, tribal society ready? Are we part of the woke culture? A culture that realizes, yes, equality is something that we need to strive for. Tribal society में equality जो structure है उसको integrate करना है. Are we striving for that? I don't have the answers. I only have the experiences. And okay, and another way of seeing it is, this is more in a positive light. Tribal society has, again, a very, a highly loaded term, gerontocracy. What is gerontocracy? Google karo. Gerontocracy, tribal society all over the world, majority of the tribal societies are gerontocratic societies. Gerontocracy matlab elders, जो senior members हैं, they decide political important matters of the community. And हमारा जो tradition है, हमारा जो tribal society है, it has, been like that. But now, woke culture, treating everyone equal on the basis of merit. I think we are opening up. Abhi sirf because you are a senior, therefore you will take all the decisions. No, right? Because you are able. You are able, therefore you are in that position, therefore you should be in that position. So I think in that case, there is lots of, in 50 years of, Arunachal as a state, I think we have really, made amends and, stretched the political, traditional practice where we can make amends and where we cannot. Another very troubling one is, patriotism towards our clan. आप इंजीनियर बन जाओ, आप एई बन जाओ, आपका क्लैन आपको हर फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बुलाएगा कि नहीं? हर स्टूडेंट यूनियन आपको बुलाएगा, भैया आइए, and they will expect you to contribute money. They would expect उसका MTS जो ऑफिस में होगा ना, प्लीज इसको घुसा दीजिए, प्लीज ये इतना ये क्वालिफाई हो गया है, इसको घुसा दीजिए. So here you are, trying to fit in the woke culture. नहीं, merit. I have to do my job, I have to stick to my position, my work. Then here you are, a clan member, और आपका clan जाति बाई बोल रहे हैं कि अरे आप ये भी नहीं कर सकते हैं अपना कम्युनिटी के लिए, इनको एटलीस्ट MTS घुसा दो, ड्राइवर बना दो, या आपका ऑफिस में नौकरी दे दो. The person in between faces all the challenge, right? इस तरफ जाओ, मेरिट को स्टैंड करो, या अपना क्लान के टुवर्ड्स पेट्रियोटिज्म निभाओ. This is a big challenge. अभी
I think very much many of us have been integrated with the idea of woke culture, and for which I think merit stands, has a big integrity, a big role to play. पर अगर आप ट्रेडिशनल साइड में जाओ, जैसे अर्लियर मैनी अंकल्स और आंटीज यू विल नो, ऐसा करके बहुत सारा को घुसाया है, ये नॉन फैक्ट है कि नहीं? हाँ, आपका अगर बस्ती से कोई किसी ऑफिस में डायरेक्टर बन गया तो घुसा दो. But that was, I mean, it's difficult to point fingers at them. आपने गलती किया है, you're corrupt. That is also a pressure that a person belonging from a clan society face. कि अरे आप तो ये क्लान मेंबर है, अच्छी आप अपना बिरादरी के लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो दैट प्रेशर इज स्टिल वेरी मच देयर. जो आप लोग फ्यूचर एई बनेगा, चीफ इंजीनियर बनेगा, जो एपीसीएस ऑफिसर्स बनेगा, यू विल स्टिल फेस द सेम प्रॉब्लम. So this is a position that I'm putting forward ki where we are at the crossroads in 50 years, traditional practice, our patriotism, our responsibility towards our clan, and then standing for merit, for an egalitarian system. The choice is ours. What kind of society we want? The choice is in the hands of each individual. And that's how we will move forward, right? And lastly, our Honorable Chief Minister Pema Khandu sir was also saying that, from the discussions today, if something, comes up, they are happy to integrate it in the policy making, which is not very far right here, right? We are here in the policy makers, room in the temple. So we are moving because traditional tribal society has also been a very much egalitarian society. Egalitarian ऐसा नहीं है कि सब equal है. Gender relations में equality नहीं है. Slave जो system था, working जो relationship है, उसमें भी egalitarian नहीं है. But egalitarian इसलिए था because people have equal chance, opportunity to access natural resources. है ना, नदी, पहाड़, खेती, land. At least on this basis, I am saying that tribal society to a great extent has been an egalitarian society. So, abhi, in 50 years from then and now, where is this egalitarian society moving? Studies have already argued that many tribal societies are now becoming class societies. कि tribal society में ही एक upper class system type का निकल गया है, which dominates resources, land bolo, capital bolo. So where are we heading? So I don't have an answer. Yesterday, I don't know, somewhere there was a discussion. If you don't have an answer, you shouldn't put out that, you shouldn't give an opinion if you don't have a solution. But I don't think that is the right way. Even if I don't have a solution, somebody may have a solution. So I'm putting out the problem. Where our society is moving from an egalitarian to a non-egalitarian perhaps. Because now there are many cases of landlessness already coming up in Arunachal. Okay. So whenever I hear wind up, I just forget everything, the flow. Sorry, sir. Okay, my last point is the request I don't know if the policy makers, people are also sitting here, if they can integrate this
especially for place like, upcoming urban areas like Itanagar, Pasigat, which is crowding, हमारा villages जो है खाली हो रहा है, सब लोग यहीं आ रहा है सब लोग. And there are so many questions of quality life. हम रास्ता में नहीं चल सकते because there are no footpaths. बच्चे कहाँ जाएंगे? There is no place to play. मॉल में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? You have to pay for that. So where are the parks? Where will our senior citizens? My dad, he is in his 80s. He is here in Itanagar, but I cannot take him out anywhere. Cramped up. उसको क्वार्टर में घुसा के रख देना पड़ता है. अभी कहाँ ले जाएगा उसको? What about quality of life? What about quality drinking water? Basic, human life conditions. So, are we as youths or are our clan organizations raising issues about these necessities of quality life? I honestly feel we are wasting our resources in festivals and cutting mituns and feeding. 1 crore का बजट बनाता है for one festival, 1 दिन 2 दिन में अपोंग और खाना और मीट में खत्म कर देता है. Can't we put that into resources that will benefit everyone? So, thank you so much. I'll wind up here. If there are any questions, I'm ready to take later on. Thank you. Thank you, Ms. Jilfa Modi, for enlightening us with your beautiful views on work culture. Time was a constraint, otherwise we would have loved to listen to your topic more, but I'm looking forward to listening to you in the near future. And yes, I must say your topic was a food for thought for all of us. So, next speaker, may I please request Sri Raken Ingo, Advocate, Guwahati High Court Permanent Bench, Itanagar. He would be speaking on students' politics in Arunachal Pradesh, their role and impact. Over to you, sir. Thank you very much. I am extraordinarily delighted to sit over here with my respected ma'am. She was my teacher at Deranatin Government College, Itanagar, during 2004, Ms. Doirote ma'am. Whereby I can address my young student friends. See, my friends, many of you may not know the student politics in Arunachal Pradesh and its emergence. Today, we could only know the student politics and its existence and role being played by the present student leader. आप में से हर कोई नहीं जानते होंगे when the student politics came into existence in the state of Arunachal Pradesh. Today, we are celebrating the 50 years of glorious journey of our state. But I would say this student politics in the state is far senior than our state. The student politics in our state started way back in 1947 at Pasigat. There was a student organization called Abor Miri Student Union, formed way back in 1947 by our pioneer like Matindai, Daing Ringsar, and etc. And their motives of forming that student organization was
to increase the educational institution in the state. At that time, there were only one primary school in Arunachal Pradesh. At the most, 20 to 30 students were enrolled during those days. And again, those Abor Miri Student Union were somehow derogatory in the terms. So that student organization again was renamed as Adi Missing Student Union. And Adi Missing Student Union, again, they were only confined within the jurisdiction of that Siang territory. Their activities were mostly confined within the territory of Siang Basin. But their activities were muchly influenced and inspired by the people of Subansiri Basin. And again, on that part, Apatane and our Nisi brothers, they formed a student organization in their respective areas. And again, they have collectively started to work for the betterment, for the goodness of the state. And mostly they were act, and they were imported, and they were advocating for the educational advancement of the state during those days. आप सोच के देखिए, आज का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जो जानते हैं उन जमाना में भी हुआ करता था. गोल एक ही है, टारगेट एक ही था. हम अपने स्टेट को एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट्स किस तरह आगे बढ़ने में कंट्रीब्यूट कर सके. ये सिलसिला उस समय से ही चलता आया. बट इन द ईयर 1959, again, those Adi Missing Students Union और जो हमारे सिबंसरी बेसिन का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलके आगे आया और एक ग्रेटर प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का प्रस्ताव रखा. अगेन द मीटिंग वाज हेल्ड एट पासीघाट, क्योंकि उस समय एक ही जगह हुआ अच्छा वाला हुआ करता था, पासीघाट सियांग, क्योंकि वहाँ सब आके हम यूथ, नवयुवा और स्टूडेंट्स मिल के स्टेट के लिए क्या काम कर सकता है डिस्कस किया. और उस मीटिंग में फिर नोमेनक्लेचर ऑफ आदि मिसिंग स्टूडेंट यूनियन फिर एंटायर स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है बाय नोमेनक्लेचर. तो उस मीटिंग में सब ऑल नेपाल स्टूडेंट यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा. अगेन दैट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल नेपाल स्टूडेंट यूनियन was formed. But in the year 1972, जब हमारा राज्य का नाम नेपाल से अरुणाचल बना दिया, तो अगेन दैट नेपाल स्टूडेंट यूनियन नोमेनक्लेचर जो सूट नहीं किया. तब जाके जैसे हमें अरुणाचल प्रदेश का नाम मिला, then again that all Nepal Student Union was renamed and rechristened as All Arunachal Pradesh Student Union.
तब जाके हमारे यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का मूवमेंट, अभी जो हम प्रेजेंट जनरेशन जो अपसू के नाम को जानते हैं, 1972 से ऑल नेपाल स्टूडेंट यूनियन से ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का नाम दिया गया था। और उस जमाना में आज की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जिस तरह अभी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आगे चल रहा है, उस जमाना में हम वो चीज देखने नहीं मिलता था। एस्पिरेशन सब का सेम था, एक ही था, टू डू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द स्टेट बैक एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ। लेकिन समय के चलते बदलते गया और आज जिस फॉर्म में हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आज देख रहे हैं, तो आप में से हर किसी को उस बदलाव और चेंजेस को पता नहीं चलेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन को जरूर आप महसूस कर सकेगा। क्योंकि उस समय भी सबका मन में ये था, स्टूडेंट लीडर हो या यूथ लीडर हो, सबका मन में एक ही एस्पिरेशन था कि एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंटल इश्यूज को कैसे हम यूथ और उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में हम किस तरह बढ़ चढ़ के आगे आ सकता है एज ए यूथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम गर्व से 50 इयर्स स्टेट का मना रहा है, और इस 50 इयर्स में एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट्स, एज ए फ्यूचर ऑफ द स्टेट, हम आगे क्या कर सकता है, दैट हैज टू बी डिटरमाइंड बाय अस। अभी मैं एक आपका लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। एज ए लॉ पर्सन, एज एन एडवोकेट, हर चीज में आप आगे आने के लिए स्टूडेंट यूनियन में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही रहना वो जरूरी नहीं है। आप सोसाइटी को, स्टेट को एज ए यूथ किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है स्टेट का डेवलपमेंट के लिए, वो आप पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहना ही है, ये कोई उचित नहीं है। यू कैन कंट्रीब्यूट बाय योर ओन वे। जैसे अभी डेवलपमेंट का नाम से हमारा स्टेट में बहुत सारा हाईवेज, बहुत डेवलपमेंट एक्टिविटीज अभी चल रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट का चलते हमारा दूर दराज गांव में बेसिक राइट्स, बेसिक फंडामेंट्स, जिसको जो चीज जानना चाहिए, जो चीज मिलना चाहिए, whether that packages is being able by the people of that particular area or not, वो चीज को हम एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, हम बताना मेरा दायित्व है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत सारा वेलफेयर एक्टिविटीज, वेलफेयर स्कीम्स देते हैं, और उसके चलते हमारा जो लोकल है, रूरल एरियाज का जो पॉपुलेशन है, जिसका प्रॉपर्टीज इफेक्ट होने जा रहा है, उसके लिए भी कुछ पैकेजेस रखा जाता है। बट ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द प्रोविजंस, हमारा जो गांव, दूर दराज रूरल एरियाज का जो पॉपुलेशन है, अपने हक को नहीं जानते हैं। तो हम एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, उस हक को हमारे जो रूरल एरियाज का जो पॉपुलेशन है उन तक पहुंचाना, ये हमारा काम है एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। और कहीं ना कहीं हम वो काम करते हुए
हम स्टेट गवर्नमेंट को मदद कर रहा है, उसका ड्यूटीज को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम शेयर कर रहा है। जैसे अभी जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी हाईवेज का नाम से, ट्रांस अरुणाचल हाईवेज का नाम से अभी डेवलपमेंट चलता है। डेवलपमेंट इज मोस्ट वेलकम बाय, वी मस्ट वेलकम द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। लेकिन उस डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारा रूरल एरियाज में क्या क्या आपका एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट होने जा रहा है, फ्लोरा एंड फौना में क्या इफेक्ट होने जा रहा है, ये हम यूथ एज ए स्टूडेंट्स एज इंटेलेक्चुअल हमारा ड्यूटी है कि हम हमारा जो रूरल एरियाज का जो इग्नोरेंट पब्लिक है उसको बताना, एजुकेट करना। और इसका चलते हम गवर्नमेंट का कुछ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, बर्डन को हम शेयर कर रहा है, यह समझ के आप चलना पड़ेगा। और आज जिस तरह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स उभर के आया है अरुणाचल में, मैं तो चाहे वो आपसू हो चाहे आंसू हो, जो प्राइमरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट में अभी चल रहा है, उनका भी आप कंट्रीब्यूशन को यू कैन नॉट इग्नोर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस प्रोग्रेसिंग स्टेट। They are trying to contribute from their own. They are trying to contribute their best for the good of the state. हम जब कुछ काम करने लगता है तो उसमें हमेशा दो पहलू को हम देखना होता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हो या वो स्टूडेंट कैंपस पॉलिटिक्स हो। हर समय निगेटिव को ही हम लेके चलेंगे तो हम पॉजिटिव का एंगल में काम करने के लिए मेरे पास बहुत ही कम वक्त रह जाएंगे। क्योंकि आज एक ऐसे समय आ गया अरुणाचल में जहाँ पे हम बार बार कह रहा है कि 50 इयर्स का जो ग्लोरियस जर्नी मना रहा है, तो उसमें अब आप खुद को पूछिए, हम सब खुद को पूछना है कि हमने आज अरुणाचल को, अपने स्टेट को एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोसाइटी को हमने क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब गवर्नमेंट का पार्ट को तो गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट आर डूइंग देयर बेस्ट, गवर्नमेंट आर डूइंग व्हाट एवर देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर। बट हम जब यूथ गवर्नमेंट का एंडेवर इनिशिएटिव्स को जब हम साथ नहीं देंगे तो गवर्नमेंट अलोन कैनॉट डू मच। पहले जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री साहब ने बोला, जहाँ पे यूथ का पार्टिसिपेशन कम होता है वहाँ पे हर चीज़ का जो विकास कार्य का काम बहुत स्लो से चलता है। तो मेरा ये मानना है कि फ्रेंड्स, आज से 50 इयर्स बैक का बात कहो और 1947 में जब आबोर मिसिंग मेरी स्टूडेंट यूनियन बना था, उसमें भी एक ही उसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत काबिल तारीफ रहा, क्योंकि उन्होंने भी उस जमाना का जो लीडर था हमेशा सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ और एजुकेशनल ग्रोथ, एजुकेशनल एडवांसमेंट का ही काम करते आया। और जब नेपाल स्टूडेंट यूनियन बना अरुणाचल में, तब भी उस एंगल में ही काम करते रहा। उसके बाद जब हम 1972-74 जब नेपाल से आपसू बन गया, तब भी वही एक ही काम, स्टेट को कैसे आगे बढ़ाना है और प्लीज वाइंड अप सर, कैसे योगदान देना है। और आज एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का चलते ही कुछ कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर में
बैलेंस करके रखा हुआ है, चाहे वो रिफ्यूजीज इश्यूज हो, चाहे वो आपका पीआरसी इश्यूज हो, हर दम गवर्नमेंट को हमेशा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एडवाइस सजेशन दे के आते रहा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का चलते। और अब हाल ही में आप देख रहे होंगे कि हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का चलते, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का चलते ही स्टेट में एक ऑफ स्प्रिंग बिल भी टेबल होने जा रहा है। तो ये सब एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। और हमेशा हम जब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में काम करेंगे तो हम युवाओं के, हम यूथ्स के, हम स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन को हमेशा आने वाले फिर नेक्स्ट जनरेशन भी याद करेंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Advocate Reckon, for your briefing on the history of students' politics in Arunachal Pradesh. You have talked about the role, most of the positive roles and contributions, how they can contribute to the overall development of the society. So thank you so much. And now I would like to request Dr. Pema Khandu Goiba. She is assistant professor in the newly established department of Rajiv Gandhi University, that is Agriculture Sciences. So I would like to request again to their esteemed panelists to stick on your time. So the mic is yours, Dr. Pema. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Okay, so thank you, sir. Okay. Thank you, Sumpam, sir. And yeah, I will not be taking more than 10 minutes, I think, because I came well prepared, and almost I'll be reading out, I feel, because I wanted it to be concise. So first of all, I'd like to thank wholeheartedly for this opportunity to share my views on the topic, regaining self-sufficiency in agriculture, post-COVID realization. So after COVID-19 pandemic and during the lockdown, हम लोगों को ये महसूस हुआ जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, इंटरस्टेट मूवमेंट्स वगैरह जो सब कुछ था बंद हो गया था, दैट टाइम वी हैव रियलाइज्ड कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी सेल्फ सफिशिएंट सो दैट वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर स्टेट। जब सब बंद हो जाएगा तो हम लोगों को जितना रिसोर्सेज है वो अपना यहाँ पे भी अवेलेबल होना चाहिए। सो कीपिंग दैट इन फोकस, I feel this topic was framed. So being an agricultural country, around 20% of GDP of India is contributed from agriculture and allied sector, according to the Economic Survey 2021. When we come to Arunachal Pradesh, 28% of the state GDP comes from agriculture, forestry, and fishing sector, which means agriculture plays a huge role in the GDP of both our state as well as country as a whole. Though the agriculture sector in Arunachal Pradesh and also in country has been exhibiting impressive growth over the years, it also faces multiple challenges owing to a host of issues in the state as well as country. Despite the cultivation of certain vegetables in some pockets and their exports to other states, the state mainly sources essential vegetables and fruits from other states. That means हम लोगों का यहाँ पे जो स्टेट में जितना भी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो होता है, वेजिटेबल्स ग्रो होता है, ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे कि विदाउट मच इनपुट एंड मच सॉइल मैनिपुलेशन, कल्चरल ऑपरेशंस अच्छा वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते, क्रॉप्स ग्रो कर सकते, बट स्टिल फॉर मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स वी डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स. सेकेंडली जो हम लोगों का मीट कंजम्पशंस है और जो एनिमल प्रोडक्ट्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो भी ज़्यादातर जो दूसरा स्टेट्स है वहाँ से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट जब कोविड-19 पैंडमिक हुआ था उस टाइम पे एडेड चैलेंजेस जो इन प्रोडक्ट्स को लेकर
हो गया था. So COVID-19 pandemic made us realize many important things in life that were earlier ignored, and the most important of them was to be self-sufficient in every possible way. Normal life in India came to stand still since 23rd March 2020 due to lockdown imposed as a precautionary measure step against COVID-19. One of the major problems during the lockdown was the unavailability or the exorbitant price of the food items, because अगर of course resources कम होगा या फिर food जो items है उसका import कम हो जाएगा तो prices जो है वो obviously increase होगा. This was mainly due to uncertainty imposed by the pandemic crisis, restriction on interstate movements, and absence of transportation disrupted the food supply chains and spiked food prices and also affected farm operations. The reverse labor migration led to scarcity of labor as well. The COVID-19 induced lockdown exacerbated food loss at production, marketing, distribution, and wastage at household consumption level. Especially a state like ours, which already is highly dependent on the product imported from other parts of the country. Therefore, we were enabled to strengthen the agricultural sector of our state against crises such as COVID-19 pandemic to become self-sufficient. On that account, अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उसने भी सितंबर 2021 में एक एग्रीकल्चर सेक्टर में और एक हॉर्टिकल्चर सेक्टर में 2 स्कीम लॉन्च किया था. इन एग्रीकल्चर सेक्टर इट वाज कॉल्ड आत्मनिर्भर कृषि योजना, और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो था वो था आत्मनिर्भर बागवानी योजना, जहाँ पे 45% जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज था, 45% बैंक लोन, और ओनली 10% जो था वो जो फार्मर को पे करना था. तो इस टाइप का जो स्कीम्स और भी सेंट्रली स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू प्रमोट एग्रीकल्चर इन आवर स्टेट. फर्दर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज जो है जिसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर फैमिली फार्मिंग. फैमिली फार्मिंग जो है इट विल नॉट ओनली प्रोड्यूस फूड बट सेव बायोडाइवर्सिटी, प्रोड्यूस न्यूट्रिशियस एंड लोकल फूड्स, develop new strategies and develop innovations to tackle social, economic and environmental challenges. For example, जैसे kitchen gardening हो गया और terrace gardening वगैरह है, this type of in small scale जो practices we can adopt. Secondly, collective farming एक है जिसमें farmers collective such as FPOs in the state have proved to be very effective even in emergency periods during COVID lockdown. Dune farmer producer organizations promoted by the NABARD in Changlang district and the Arunachal Farmer Producer Cooperative Society in Sagali, Papumpare helped the public by way of supply of fresh homegrown vegetables during COVID-19 lockdown. Third में है storage infrastructure, जो पुअर रोड कनेक्टिविटी हम लोगों का स्टेट में होने की वजह से एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो सम पॉकेट्स में हम बताया था कुछ क्रॉप्स जो है वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं बट उसको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे में स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स है जिसका फ़ायदा उठा के ऐसे साइंटिफिक लो कॉस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो जो बना सकते हैं जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में, सो दैट जब तक उसका ट्रांसपोर्ट ना हो शेल्फ लाइफ को क्रॉप का इंक्रीज कर सके. You have to be on time. Okay, sorry sir. लेबर फॉर एग्रीकल्चर, तो मोस्ट ऑफ द लेबर जो है हम लोगों का वो बाहर से आता है, स्पेशली आसाम वगैरह से. सो गवर्नमेंट हैज़ टू मेक सम पॉलिसी, अट्रैक्टिव पॉलिसी टू मेक दोज वर्कर्स स्टे इन आवर स्टेट एंड वर्क. एंड थर्ड है नेक्स्ट है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर फाइनेंस, जैसे कि ऑलरेडी मेंशन किया था आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना. ऑल्सो देयर आर मेनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना. तो देयर आर मेनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एज वेल विच कैन बी मेड यूज ऑफ
इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ बाय प्रिपेयरिंग प्रोसेस्ड फूड जो होता है जैसे कि जूस हो गया, पिकल हो गया और स्वीट्स हो गया, फिर वाइन, जूस, हेल्थ ड्रिंक्स, dehydrated fruits and vegetable product. Those processed food can be prepared to increase the shelf life of the agriculture products. उसके बाद investment in agriculture and research development जो है वो उसमें भी स्कीम्स वगैरह जो मेंशन किया है ऑलरेडी वही सब आएगा. देन प्राइस एंड रेवेन्यू रिस्क मैनेजमेंट. COVID-19 had less or negligible effect on food prices except for vegetables. However, food prices are plagued by high volatility. तो food prices जो है उसका prices जो वो high volatility means उसका highly fluctuation होता है. तो इसमें क्या करना है, गवर्नमेंट को एक ऐसा सब्सिडी देना है ताकि ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको भी वो लोग फार्मर्स को इस जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उससे सेफ गार्ड कर सके. सो दिस आर द फ्यू मेजर्स दैट कैन बी एडॉप्टेड टू ब्रिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन आवर स्टेट. So I would like to conclude by sharing a thought by Mr. M.S. Swaminathan. If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right. Thank you, sir. Thank you, Dr. Pema, for your beautiful thoughts. Especially this was very important topic considering the COVID-19 pandemic situation. Thank you so much. Now may I request Dr. Doi Ete Taipodia, Assistant Professor, Department of English, Rajiv Gandhi University, to speak on literatures of Arunachal Pradesh. Before that, may I please request our esteemed audience not to leave the hall because we have another session after this panel discussion. Thank you so much. Thank you, sir. I'll speak very fast. Otherwise, I will not cover all my points. First of all, I take the opportunity, सबको 50 years celebration के लिए, this glorious journey of our state. I have been given the topic literature, and I would like to begin with what my esteemed colleague Zilfa had just told me before we came on the dais. उसने कहा कि ये topic तो हम ज़्यादा देखता भी नहीं है ऐसे discussion में. ये इससे पता चलता है कि लिटरेचर कितना कम डिस्कस होता है. लेकिन what I want to tell, because I will try to speak in English because सर हिंदी की लिटरेचर बोलेंगे तो I don't want to enter into his area. Okay, but what I would like to tell is that when we are celebrating our 50 years, at the same time mapping the journey of our state, this celebration will not be complete unless we take into account our literature. No society can be completely comprehended if we leave its literature out. Now, literature is a mirror. All of us know literature is a mirror to ourselves. But literature is also the memory of our past, our ancestors, our roots, and it also helps in envisioning our future. In a tribal society like ours, storytelling is a very important part. हमारा तो oral culture है, okay? तो oral culture को तो हमने देखा है कि in academic discussion, oral culture को क्या बोलते थे कि ये oral है, it's not literature. ऐसे बोलते थे for many years. I have also gone through, मुझे भी बहुत difficulties हुई थी अपने PhD करने में. When I went to Statehood University, I wanted to do literature, research in our literature. लेकिन हमको बताया कि आप लोग का sufficient material नहीं है, sufficient text नहीं है. Then I was advised that कि आप कुछ और area में कीजिए, then as an interest, you take it up. Today as a guide, मेरे अंदर 4 research scholars हैं, जिसमें से सब लड़कियां हैं. और I have taken girls, no partiality, but क्या है कि उनका research area मुझे interesting लगा. तो कोई literature of Arunachal पे कर रहे, कोई गालो पे कर रही है. Another is from the Monpa tribe. I have a scholar. Yeah. तो क्या है कि you know, as an academician, I think it is my duty now कि हम अपने literature को भी आगे बढ़ाएं.
आप में से कितने लोग ने अरुणाचली राइटर्स का लिखे हुए नोवेल्स, पोएम, शॉर्ट स्टोरी पढ़े हैं? How many of you? Please raise your hand. See, it is not making even कितना परसेंट सर? बहुत कम है. 8 या 9%. तो ये दिखाते हैं कि हमारा स्टेट का सिचुएशन क्या है लिटरेचर को लेके. एक मेजर हिंड्रेंस था कि हमारा स्क्रिप्ट नहीं है. वी वे टोल्ड दैट हमारा रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रिटर्न स्क्रिप्ट, मुझे एक कहानी याद आ रही. हमारे स्पेशली तानी ट्राइब में कहानी है स्क्रिप्ट को लेके कि इट वाज रिटन ऑन जो एनिमल का स्किन होते हैं ना, लेदर पे. किसी किसी का है कि इट वाज हमारा स्क्रिप्ट था ट्री का बार्क में, किसी किसी का है कि लीव्स में. हाँ, तो क्या हुआ, एंड इवन इन नागालैंड सम ट्राइब्स हैव सच स्टोरीज. तो कोई स्टोरी में क्या है कि लेदर जो है स्किन, एनिमल का स्किन फायर में गिर गया और किसी ने खा दिया उसको. किसी में है कि ट्री का बार्क, मैंने बहुत भूख लगा, फेमिन था, खा दिया. सब स्टोरी में स्क्रिप्ट को खा दिया हम लोग का. लेकिन ये क्या है कि मुझे लगता है ये एक एंजाइटी है स्क्रिप्ट को लेके. लेकिन हमको नहीं लगना चाहिए कि दिस इज लिमिटिंग अस. स्क्रिप्ट शुड नॉट लिमिट अस. इनफैक्ट क्या है, व्हेन यू लुक एट अदर सोसाइटीज, ग्रीक सिविलाइजेशन की बात कीजिए, इलियड, ओडिसी, दिस ग्रेट एपिक्स. हिंदू सिविलाइजेशन की बात कीजिए, रामायण, महाभारत, सब ओरल से तो आए हैं ना. दे वर ओरल फर्स्ट एंड देन रिटन फर्स्ट. व्हाट आई वांट टू से इज दैट हमारा भी लिटरेचर है, रिच लिटरेचर, ओरल लिटरेचर, मिथोलॉजी है, फोक सॉन्ग है, फोक लोर है. So as youngsters, I think you should go back to your oral tradition, write stories, read stories. We have 2 story writers here. Sindik sir hai, even Dodum writes. Okay, and read them. So I want to come to another very important discussion is the history of literature in Arunachal Pradesh. See, when we were in NEFA, Assamese was introduced as the medium of instruction. तो हम बहुत लोग, आप लोग के बहुत parents, I think they know how to read and write Assamese because they read in that medium. So our first generation writers like Lumma Dai, Waidi Thongchi sir, many more, they wrote in the Assamese language. Today, they are well recognized in Assam, very respected. In fact, Lumma Dai's, in his name, there is a prize also in Assam. But how many of us know about them? They are treated like gods in Assam. Every year they are invited to Assam, especially by the Assam Sahitya Sabha. But what was the limitation was that us, the second generation, we didn't know how to read and write Assamese because by that time, the government had introduced Hindi and English into our state. So you see this shift. From the Assamese language, you see the shift to literature being written in English language and literature being written in Hindi language. So the influence of the language policy that was introduced by the government in the NEFA time, later on changed to Hindi and English, when that was around the 1960s, we see a change in the medium of language that was used to write literature. So this also had, it helped in the growth and development of literature. Then another very important, because I have to connect this topic with the youth and also with 50 years of Arunachal Pradesh. And in the morning, our CM sir, then also you had the speaker, and also Vice Chancellor of Rajiv Gandhi, everyone spoke about identity, pan-Arunachali identity. And literature plays a very important role in developing this sense of Arunachaliness. So I can say with confidence that like you have Indian writing in English, like you have American literature, like you have African literature, like you have African American literature, you also have Arunachali literature.
we have Arunachali literature. We have very famous names like Vaidi Thongchi, Lumbar Dai, you have Mamang Dai, who have received Padma Shri Award, they have received Sahitya Academy Award. And people know them as Arunachali writers. Not Monpa writer or Adi writer, Arunachali writers. See, all of us cannot travel all around the world, but our books travel. That is how the world knows about us. That is how literature also plays a very important role in creating this identity known as Arunachali, this pan-Arunachali identity. Finally, I would like to say that as an academician also, I would like to talk about this need for relationship to build between the civil society and then literary societies, like you have Arunachal Pradesh Literary Society. We also have other groups and academicians, like in colleges, in universities, to introduce such books to our students. Like in Meghalaya, you have, they have BA course, they have MA course, they have PhD in the Khasi language. It's not that Khasis have their script. They don't have. They use the Roman script. So they do PhD in Khasi. Here, we are just introducing our native languages into schools now because of the importance given in new education policy. Okay? So I think that today, at least, I encourage some of you to read novels, poems, short stories, to go back to your oral tradition, to go back how your ancestors lived, what your customs, traditions were, okay, and write about it. Thank you so much. Thank you, Dr. Dui. Thank you so much. You was on time. And yes, that was a really very interesting topic, sharing your thoughts about the literature of Arunachal Pradesh. Now, I would like to invite Dr. Taro Sindik, Assistant Professor, Department of Hindi, Dera Natung Government College, Itanagar. Dr. Sindik himself is a writer, and we all know about him as he has brought a lot of laurels to this beautiful state of Arunachal Pradesh by winning awards because of his work on Hindi literature. Over to you, sir. Thank you so much. Yeah, thank you, sir. अरुणाचल प्रदेश के नामकरण के 50वें इस स्वर्णिम वर्षगांठ को हम एक साथ मना रहे हैं हमारे राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के इस बहुत ही खूबसूरत सभागार में। हमारा प्रदेश बहुत ही विचित्र प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इसका जन्म ही बहुत विचित्र तरीके से हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच से कहकर गए हैं कि हमारा राज्य जो वो स्टेटहुड के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कुछ प्रबुद्ध जनों ने इसका बहुत विरोध भी किया था, वो धरना पर बैठ गए थे, लेकिन हमारे देश की सरकार ने ठोक दिया कि चलो तुम बन जाओ, तुम तैयार नहीं तो क्या हुआ, तुम बन जाओ। तो बन गए। और अमूमन होता है कि पहले कोई जन्म लेता है उसके बाद नाम आता है, लेकिन हमारे प्रदेश के संदर्भ में उल्टा हो गया। नाम पहले आया फिर बाद में राज्य बना। तो अपने आप में इसका इतिहास ही विचित्र है। और हमारा भौगोलिक परिवेश, हमारे यहाँ के जनजाति कौन कहाँ से आकर बस गए, इतिहास बहुत ही अजीबोगरीब। सबकी अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी बोलियाँ हैं, अपने अपने रहन सहन, खान पान। पूरब के लोग पश्चिम में जाएं तो लगता है कि हम कहाँ आ गए, पश्चिम के लोग पूरब जाए तो लगता है कि हम किसी विदेश में हैं क्या, कि हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। लेकिन किसी तरह 50 वर्ष हमने पूरा कर लिए और आज हमारे जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश जो है वो जवानी की दहलीज को पार करने वाले हैं। ये 50 वर्ष का हो गया है। तो इन 50 सालों में हम तो 50 वर्ष के नहीं हुए, लेकिन भी अपने अब तक के जीवन काल में बहुत सारे परिवर्तन देख लिए। जिस तरह से हमारे राज्य को ठोपा गया है उसी तरह से कई सारी चीज़ें यहाँ ठोप दी गई हैं। कहते हैं ना कि हमारा स्टेट जो है वो इवॉल्व हुआ ही नहीं, सब कुछ अचानक से आ गया। और कोई भी चीज़ अचानक से आता है तो हमें समझ भी नहीं आता है कि हम इसको किस तरह से रिसीव करें। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ उलट पुलट है।
लगता है कि देखने में बहुत सुंदर है। हम तो अपने स्टेट के हैं तो ऑब्वियसली हम उसका गुणगान गाएंगे ही। बहुत सुंदर है, हिमालय की गोदी में बसा हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है वैसा है, लेकिन अंदर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें देखते देखते भौतिक स्तर पर हमारा स्टेट जो है वो बिल्कुल उभर कर सामने आ रहा है ना। जंगलों को काट कर यहाँ पर ईंट पत्थरों की जंगलें खड़ी हो रही है। हमारे आजम बगंग मैडम जी ने इस पर चर्चा की है कि हम ट्विन कैपिटल सिटी में देखते हैं हर जगह कितने पहाड़ों को काट दिए गए हैं, है ना। किस तरह से मतलब इतनी बेरहमी से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। फिर भी हम गर्व से इतरा के बोलते कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, सॉरी देश नहीं, राज्य बहुत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, हम बहुत फैशनेबल हो गए हैं, हम हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, इंग्लिश पर हमने बहुत दक्षता हासिल कर ली है, हमने अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना लिया है, देश राष्ट्रीय स्तर पर बना लिया है। बहुत सारे फील्ड में हमने बहुत आगे बढ़ लिए हैं हमारे प्रदेश। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है जिसका जिक्र मैडम जी अभी कर रही थी कि लिटरेचर बहुत पीछे रह गए हमारे प्रदेश में, है ना। हालांकि हमारे यहाँ पर मैडम जैसे कह रही थी कि ओरल ट्रेडिशन बहुत प्राचीन है, लेकिन उसे कहीं कभी भी एक लिटरेचर का रूप में उसको स्वीकार ही नहीं किया गया। इन 50 सालों में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कहीं भी किसी भी स्टेज में हमारा ओरल जो लिटरेचर है कहीं भी उसको जगह नहीं मिली है। हम आज तक बाहर के लोगों को पढ़ रहे हैं, जबकि अपने यहाँ पर पढ़ने को इतनी सारी चीज़ें हैं, हम वो पढ़ नहीं रहे हैं, हम किसी और को पढ़ रहे हैं। किसी और को पढ़ने का मतलब क्या हुआ, हम उसकी भाषा को पढ़ रहे हैं, उसकी संस्कृति को पढ़ रहे हैं। क्योंकि लिटरेचर सिर्फ ये एक मनोरंजन का साधन नहीं होता, लिटरेचर हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। लिटरेचर को पढ़ते पढ़ते हम कई बार उस जैसा बन जाते हैं, हम उसमें डूब जाते हैं, वो हमको प्रभाव किए बिना रह नहीं सकता। तो बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे प्रदेश को हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ऊपर ही ऊपर से हम सिर्फ कहते रहे कि हमारा प्रदेश सबसे सुंदर है, बहुत डाइवर्स स्टेट है, और इसमें हम इतना डाइवर्स स्टेट होने के बावजूद हम इसमें एकता को देखते हैं, है ना। एक लघु भारत की हम हमेशा बात करते रहते हैं। तो लिटरेचर, चलो अब वापस आते हैं टू द पॉइंट पे। हिंदी पर मैं अब आना चाहूँगा। इंग्लिश और असमिया लिटरेचर पर मैडम ने बात करी है, तो जब बात कर ही रहे तो मैं कुछ साहित्यकारों के नाम में आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कम से कम जिन लोगों ने नहीं सुना हो वो आज सुनकर उसको जानने की एक इच्छा तो मन में जागृत हो इस मंच के माध्यम से। हमारे यहाँ पर असमिया से शुरू होती है साहित्य लेखन की परंपरा जो है, फिर बाद में इंग्लिश वालों ने उसको आगे बढ़ाया। हिंदी फिर बहुत ज़बान है। हिंदी में लेखन की शुरुआत जो है अभी केवल 1 दशक ही हुआ है। 1 दशक मतलब लगभग 1 डिकेड ही कंप्लीट हो रहा है। तो हिंदी तो अभी बिल्कुल बचपन में है। अभी इस जब बूढ़े हो रहे राज्य में हिंदी अभी बचपन की दहलीज पर खड़ी है। तो हिंदी लेकिन इस बचपन की दहलीज में खड़ी होकर भी जो लिटरेचर है इसने एक करिश्मा जैसा कर दिखाया है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मामंग दाई मैडम है, वाईडी तोंगची सर है, और हमारे स्वर्गीय लुम्मर दाई सर भी रहे हैं। इन लोगों ने एक मशाल की तरह जो है साहित्य के क्षेत्र में वो जलाए हैं। आज भी मामंग दाई मैडम है, तोंगची सर है, ये दोनों ही शीर्ष साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। और मैडम ने जैसे कहा कि असम में तो उसको पूजे जाते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं। हमारे यहाँ पर किसी को पूछे तो पता भी नहीं चलता कि वाईदी तोंगची सर कौन है। उसकी रचना को तो दूर की बात, उसकी क्रिएशंस को तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ के लोगों में रीडिंग की हैबिट बहुत कम है। वो पढ़ते भी है तो किसी बाहर के राइटर्स को पढ़ते हैं, निकोलस स्पार्क है ना, चेतन भगत, इनको पढ़ना, इनको भी चाहिए पढ़ना, ज़रूरी है, लेकिन पहले अब अपने लोगों को पढ़िए। तो हमारे यहाँ पर एक हिंदी में सबसे पहला जो कलम चलाने वाला एक नाम जुमसी सीरम जी, बहुत लोग उसको नहीं जानते हैं सर। थोड़ा सा आज वो जो है 10वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ के भी आज वो एक कृषक की जीवन जी रहे हैं। एक बहुत नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है। एक क्या कहते हैं, फार्मर का लाइफ। आलो से भीतर 10 किलोमीटर अंदर एक तादिन विलेज है, वहाँ पर वो रहते हैं। उस वीरान जंगल में रहकर जो है वो
अभी तक जो है 60-8 किताबें वो लिख चुके हैं हिंदी में। जैसे जाई बोने है, शिला का रहस्य, मेरी आवाज़ सुनो, उन्होंने हमारे स्वतंत्र सेनानी मतमुर जामो पर बायोग्राफी लिखा, कीतो सोरा एमएलए उन पर बायोग्राफी लिखा, उपन्यास उन्होंने लिखे। जमुना बीनी, डॉक्टर जमुना बीनी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अभी हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनका नाम तो सिर्फ देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान मिली हुई है। उनके लिखी हुई अभी तक 4 किताबें हैं। इन 4 किताबों में उन्होंने इतनी प्रसिद्धियां हासिल की हैं। डॉक्टर जोराम यालम जी, वो भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। उसके हाथ में 4 किताबें हैं अभी, जंगली फूल, साक्षी है पीपल, गाय गेका की औरतें। और इन किताबों को आप पढ़िए। इन किताबों को पढ़ना जो है आप अपने आप से साक्षात्कार करना है। हम ऊपर ऊपर से जितना भी अपने अरुणाचल को खूबसूरत बताएं, लेकिन अंदर की जो समस्याएं हैं वो आपको ये लिटरेचर ही बताएगा। आपको कोई स्टूडेंट लीडर नहीं बताएंगे, कोई पॉलिटिशियन नहीं बताएगा, कोई सोशल वर्कर नहीं बताएंगे, वो ऊपर ऊपर से बताएंगे। लेकिन आपको एहसास दिलाने का काम ये किताबें करेंगी। ये महिलाओं की जो बात कर रही हैं, है ना, वुमेन इक्वलिटी की जो बात कर रही है। शिल्पा मैडम, मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहली बार हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन आपने वो प्रभाव छोड़ दिया मुझ पर। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपसे। तो ये महिलाओं की जो समस्याएं हैं, है ना, उन समस्याओं को यदि आपको जानना हो, समझना हो, तो आप यालम मैडम की किताबों को पढ़िए। कि हम अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट कहने के बावजूद कहीं ना कहीं जो है हमारे हाथ पाँव में वो बंधन है आज भी। और फैन अरुणाचल की जो बात चल रही थी, हमारे मुख्यमंत्री साहब भी कहकर गए कि उन्होंने अभी तक 25 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने टूर किया है। हम में से तो किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन आप उन किताबों को पढ़िए, तो आप उन किताबों के ज़रिए इन जगहों को आप देख लेंगे, उसको महसूस करेंगे, उस समाज को आप जिएंगे। आप जैसे जमुना मैडम की अभी जो हाल ही में प्रकाशित अयाचित अतिथि और अन्य कहानियाँ, उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि लोंगडिक डिस्ट्रिक्ट में बसे हुए जो वांचो समाज है, उस समाज के अंदर का पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, वो किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं ज़िंदगी, क्या समस्याएं हैं। ऊपर से हम आराम से कह देते कि वहाँ के लोग जो है वो हेड हंटिंग करते हैं, बहुत डरावना है, वहाँ पे एनएससीएन रहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन उस समाज के भीतर का जो दर्द है वो मैंने इस कहानी को पढ़ के समझा। और पुरोहित की जो समस्या हैं, पुरोहित जाति की, है ना, उस जाति की भी अंदर का क्या दर्द है वो हम कभी ऊपर ऊपर से नहीं समझ सकते। हम इस किताब को पढ़ के समझ में आया। और वाईडी तोंगची सर की जो मांस काटने वाला शव काटने वाला आदमी, कितना खतरनाक ये टाइटल है ना, डेड बॉडी को काटने वाला आदमी। उस उपन्यास को पढ़ के मुझे उस बौद्ध समुदायों में जिस तरह से शव का दाह करता है, उस संस्कृति से मैं परिचित हुआ। अब मुझे ऐसा हो कि मैंने उस जगह को मैंने घूम लिया, मैंने देख लिया। तो किताब भी आपको यात्राएं कराती हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हमारे यहाँ के लोगों में पढ़ने की वो आदत नहीं है। वो पढ़ते भी हैं तो केवल बाहर के लोग। हमें बाहर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं हमारे यहाँ के लोगों को, है ना। जब बाहर के लोग हमें चिंकी, जापानी, नेपाली कह के बुलाते तो हम गुस्सा हो जाते हैं, क्यों हमें जापानी बुलाते हैं, क्यों चीनी बुलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के टीनेजर्स जो है अपने आप को कोरियन बनाने में तुले हुए हैं, है ना। एक अजीब किस्म की ये वो है, विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये सिचुएशन। जो हम दुकानों में जाते हैं, मिनीसो, मोमोसो, क्या क्या है नाम है पता नहीं मुझे, वहाँ जाते हैं, डांस फॉर्म भी वही हो गए, गाने भी वही गाते हैं, मेकअप फैशन सेंस भी वही हो गया। लेकिन जब बाहर वाले हमको कोरियन बुलाते तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तब हमको नस्लवाद याद आता है, उस वक्त हमें याद नहीं आता नस्लवाद। तो बहुत अजीब सी स्थिति है। तो अपने ही संस्कृति से, अपने ही साहित्य से हम जुड़े नहीं, और बाहर वाले जब हमें जिस तरह से ताने मारते हैं तो वो गुस्सा करते हैं। तो आज देखिए हमारे यहाँ के जो राइटर्स हैं, इन राइटर्स को कौन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? बाहर वाले कर रहे हैं, वो बुला बुला कर सम्मानित कर रहे हैं। और कौन बुला रहे हैं हमें पता भी नहीं चलता, वो खुद ढूंढते हैं, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। तो हम 4-5 लोग हैं, हर बार हम ही लोग जाते हैं। तो कई बार हमारे अपने ही लोग ये बोलते हैं कि ये लोग तो हिंदी में लिखते हैं तो इसलिए शायद कर रहा होगा, इस तरह के ताने मारते हैं। खुद तो कुछ करते नहीं, लेकिन जिसको वो कुछ कर रहे हैं उस पर भी आपत्ति। और ये मैं इस मंच से इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये पढ़े लिखे लोग ही बोलते हैं ऐसा।
जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वही लोग बोलते हैं ये लोग तो हिंदी में लिखते हैं इसलिए इन लोगों को सम्मान दे रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ असमिया से लिखने वालों को सम्मान दे रहे हैं, इंग्लिश में लिखने वालों को सम्मान दे रहे हैं। और जो सम्मान दे और ये लोग ये बोलते हैं कि ये तो कुछ भी लिखो दे देंगे। ऐसा मतलब या तो हमारी बहुत ख़राब है लिटरेचर या तो वो लोग बुद्धू हैं जो हमें सम्मानित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान दिए जा रहे हैं वो बुद्धू हैं। तो ये स्थिति है। तो इन 50 सालों में बाकी चीज़ें बहुत आगे ज़रूर बढ़ा होगा लेकिन साहित्य बिल्कुल पीछे पिछड़ गया है। तो आज 4-5 लोग, मैं इस बात को कहकर समाप्त करना चाहूँगा। कहने को बहुत सारी बातें हैं लेकिन ये समय जो है सीमा बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो इतना कहकर मैं छोड़ना चाहूँगा कि आज केवल हमारे हाथों की उंगलियों के बराबर कुछ रचनाकार हैं। ये लोग मसाल लेकर चल रहे हैं आगे आगे। अब इसमें क्या है कि हमें एक जुलूस चाहिए। तो वो जुलूस कौन होंगे? आप ही लोग होंगे। आप ही लोग आकर जो है उसको पूरा करेंगे, उस कमी को। क्योंकि आने वाले 50 सालों में तो पता नहीं हम कब तक ज़िंदा रहेंगे, ये नहीं कह सकता। और मेरे जो को राइटर्स हैं, हम सब कॉन्टेम्पररी हैं, वो कब तक लिखेंगे नहीं पता। जब तक हमारे में ऊर्जा है हम लिखते रहेंगे। एक समय ऐसा होगा कि हम लिखना चाहें लेकिन लिखने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे बाद की जो पीढ़ी है वो आप ही लोगों में से आएंगे। और जब तक लिटरेचर समृद्ध नहीं होगा कोई भी समाज जो है वो सभ्य नहीं कहला सकता। अब भौतिक स्तर पर हो सकता है लेकिन जो आपका मनुष्य होने के एहसास को बचाए रखने की ज़रूरत है वो साहित्य ही है। तो उस साहित्य को एक धारा के रूप में विकसित करने में आप लोगों का ही योगदान उसमें हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही हम उलूस तुलूस वाले राज्य में ही रहेंगे अगले 50 सालों तक। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Dr. Sindik. It was really, your talk was very entertaining. And thank you for entertaining us all. And yes, because I could see some of the audience smiling and laughing aloud. Thank you so much, dear audience, for listening so keenly. Now we have the last panelist, Sri Ranju Dodum, one of the senior most, senior journalist of Itanagar. He will be speaking on social media versus mass media, transition and future perspective. Over to you, sir. Thank you, sir. It's kind of strange that we've been told to speak about the youth perspective और हमको senior journalist बना दिया. Actually, I was going to take my khada and the stole off, लेकिन screen में देखा कि उसे मेरा पेट छिप जाता है, तो मैं जिंदगी भर पहन के बैठूंगा अभी. And I'll be remiss if I don't thank the organizers for inviting me here to be part of such an illustrious panel where amongst academicians and doctorates and lawyers and researchers, I feel like such an outlier and an odd person out as being just a journalist. As the last speaker, I also feel like the last batsman of the cricket team who's come in to after the team has already scored over 500 runs. I don't know what else I can do to elevate the score or increase, elevate the quality of the discussion that we've already had. Nevertheless, since I have been called here to speak about social media versus mass media, I have a little exception to the wording of that topic. I'll circle back to that towards the end. Now, I've already wasted, I think, 2 minutes of my time trying to be funny. I'll try to be factual for the rest of the time. I would just want to give a brief history of what we know as media, of what we think of when we think of the media, which is the traditional mass media. That it was in 1981 that the Itanagar Press Club, now called the Arunachal Press Club, was formed. This was 9 years after the state, Arunachal Pradesh was named, for which we are here today, for which we are celebrating today. During that time, of course, as is expected, we had mostly, it was formed by journalists who had come from outside the state. That's just how things were. I like to think over the last 2 years of COVID lockdowns and everything, my perspective on things have changed a little bit. I now think that we are all ultimately victims of our circumstances. What we do with those circumstances, those are different things. But as was expected, after the formation of the press club, we had journalists who were also members of the press club,
would be journalists who are either who have come in from outside, or I don't want to say non-locals, because I think it's a little unfair for people who were born here and raised here just because they don't happen to be indigenous people, that they are non-locals. But in the traditional sense of the word, for a long period of time, the press landscape, the media landscape, was dominated primarily by journalists who are non-tribals, non-indigenous to the state. Even though we had the press club formed in 81, the news from the state was not being read by people of the state. This was news that was going outside of the state, because we didn't have any local newspapers. We didn't have TV to thai nahi. The only form of dissemination of information was radios, and radio would play state-sponsored, state-fed information. It wouldn't necessarily count as news as such in the sense that we think of as now. That changed a few years later when we've already mentioned Dr. Lumadai, late Lumadai, who started the Echo of Arunachal as a weekly newspaper. And then a year later, the Arunachal Times was born. And so it continued for a long time, that the only way that somebody could get information in Arunachal, staying in Arunachal, was by reading newspapers. Unfortunately, because literacy levels were not that high, that information would be consumed by a small group of people. It wouldn't necessarily be mass media as such. Although traditionally in the format of things they would fall under mass media, but they won't be counted as mass media because it wasn't necessarily reaching the masses. It was only like years and years later that when late Taro Chatung, the trailblazer of our times, we were lucky to have worked with him. I mean, I can count myself lucky to have been around with him when he was working. It was his vision. It was he who took things to a different level, to the next level, by understanding the power of the visual medium, by starting, I don't know how many of you all know here, but I'm sure the panelists do, about news and views, which was, which was the biggest thing and the talk of the town for so many of us growing up as well. He was the one who actually, told us that there is a different form of news dissemination that can be done, that we should adopt. Unfortunately, because of commercial constraints, hulling around a big, massive camera, going to the Doordarshan office, roaming around Itanagar, Naharlagan, or any other place, it's not it's an expensive affair, and the reach is also, especially now, isn't very great. Thankfully, with the advent of social media, those things have changed. Social media has brought everyone closer, and everyone's all the information that we need, it's in our fingertips. Literally on our fingertips, because you're holding the phone. We're not, you don't have the burden of carrying a big TV around with you, or be fixed in a place to watch news. You can consume news sitting in the luxury of your home with your mobile phone. So that aspect of what social media has done has really changed our outlook and our how we consume news. So that's been a really big help. Now I know that when it comes to social media, the first thing we think of is Facebook. Now, Facebook, over the years, it's helped a lot of us. It's also, I think, has been quite harmful as well. I had a few points. What I think what Facebook has really done is that because now, whenever something happens somewhere, there's an accident somewhere, there's a fire somewhere, someone's not well, it's become easier for us to reach out to a larger audience, to inform the audience about the happenings around us, and things that are not around us, things that are happening miles and miles away, hundreds of miles away, thousands of miles away. It has really helped to bring democracy to journalism. The democratization of journalism has happened because of social media. Facebook primarily. WhatsApp, I would think, is more like a medium of actually sending out the news rather than actually reporting on the news. But Facebook has really helped us bring news to the audience in a much more closer sense than I think television can now only dream of. I don't think anybody even watches
the TV. I haven't recharged my Tata Sky set-top box for the last 2 months because I don't need it anymore. You know, you get your information on your mobile phones. Nobody watches the news anymore. Unless, of course, it's a link that somebody shares on WhatsApp. You know, somebody sends you a link. Hey, have you seen this? There was a fire here. You know, there's a bandh here, or they've called a bandh and they're asking the CM's resignation. You know, that's news these days. It's a great democratization of news. But I think which then begs the question of, is the democratization of news really a good thing? Do you want every Tom, Dick, and Harry to have a mobile phone and call themselves as a journalist? As you know, I'm split. I'm split in my view and my opinion about what I feel about this topic. As somebody who didn't study journalism, it gives me great pleasure and pride to say that, oh, I didn't study journalism, but look at me, I'm here on stage, I'm talking to you all about journalism. So it gives me a space for being to be arrogant. But what do I really think about this whole of journalism becoming a democracy? Is it really good? I don't know. Is it really bad? I don't know. Everybody complains about, oh, now anyone with a mobile phone becomes a journalist. एक mic ले लो, उसमें अपना channel का sticker लगा दो, and you ask question, you become a journalist. I don't think that's necessarily a bad thing. I mean, what is wrong in asking questions? Or do we not want people to ask questions? See, there's, like people say, anyone can ask a stupid question. And that's right. And, some questions, I think, stupid or not, they have to be asked. It's the person on the other end of the mic who has to decide whether he will give the smart answer or the stupid answer. So it's for them to decide. If you have 100 news channels, I think, my personal point of view, I think if you have 100 news channels, and I said this before, that if you have 100 news channels, you'll have 100 different points of views. Not everything will be seen or shown from one particular point of view, literally and figuratively. Not then the camera angle be alag hoga, and then the perspective of the news will also be different. So to say that we should have, there should be curbs on what kind of news gets sent out. We have requests and from our friends and well-wishers who tell us, "अरे तुम लोग कुछ ये press club और ये union of working journalists क्या कर रहा है? थोड़ा regulate करो." Now the day you start to regulate the media, the day you start doing that, you are no better than what's happening in the Middle East or communist China. Is that what we want? Do we want regulation of news? At the end of the day, it's up to the audience, it's up to the readers, it's up to the viewers who decide what will work and what won't work. We can always sit here and we can blame that is what the audience wants. And I have actually noticed that is primarily what at least the vocal audience wants. They want the drama. The sensible news, have a sensible discussion, there's no space for that. That's what I kind of gather from the reaction of the people when I see it on social media. The most vocal ones who are commenting on any news post are the ones who don't disagree who disagree with anyone who's talking sense. It's it's the bigotry, it's communal, those who propagate communal violence. Those are the ones who get the appreciation. It's like, "आची एकदम ठीक बोला है, ऐसा ही होना है बोल के, ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सिर्फ तवांग में डेवलपमेंट हो रहा है." That's a very common thing that I've got to hear in the last 3 years. ये तवांग में से डेवलपमेंट हो रहा है. I'm not from Tawang, so I can say that. So that's the kind of thing that we get to hear. That the people who are speaking, who are most vocal, are the ones who, and the loudest are the ones with nothing to lose. They pass a comment and everyone gets agitated, and that's it. उनको क्या लेना देना है? वो तो बोल के चला जाएगा. But if that is what if that is my point of view, that I only look at things that in the sense that नहीं audience ही ऐसा है, इसको ऐसा ही चाहिए, and actually audience is not educated, they're not enlightened enough to consume good news. But that's also, I think, a wrong perspective from my point of view. I mean, if I look at things that way, I think that's wrong. To draw parallels, it's kind of akin to what was happening with mainstream Bollywood cinema in the 80s and the 90s and the early 2000s. All those same Yashraj Chopra and Karan Johar movies, कोई झोपड़ी में कुछ actors है, प्यार हो रहा है, then suddenly there's a dream sequence, कहीं स्विट्जरलैंड में पहुंच गया. I can't even imagine, like even in your dreams, how can you
think up of designer clothes when you haven't worn anything other than a sari all your entire life? How do you even picture it? Imagine me kaise kar sakta hai? So it doesn't make sense, those kind of movies. And then you would have sensible movies come in the middle beach mein, but उसको कोई audience ही देखता ही नहीं था. Nobody watches it. मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ही कवर नहीं होता था फ्रॉम बॉक्स ऑफिस सेल्स, और उस समय में मूवी राइट्स मर्चेंडाइज होता नहीं था. सो यू वुड थिंक कि मतलब अभी डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स विल थिंक ऑडियंस को यही चाहिए, तो लेट मी कीप मेकिंग द सेम स्टफ over and over again. But then there were producers, there were directors who did take the chance, who made who made different movies. And slowly over the years, now thankfully with the advent of OTT platforms like Amazon, Netflix, Hotstar, we have seen that there have been different kind of movies that have come up. There is a greater appreciation by the audience as well that they can watch different movies. Yes, they will watch that same, Switzerland mein naach raha hai, aajkal Arunachal mein bhi naachta hai. So they'll watch that, but they'll also watch movies that are more real to their lives. So it's not, I think it's wrong to say that the audience is dumb. Maybe that is true. I don't know. Maybe the audience is dumb to a large extent. Maybe the larger part of the audience is dumb. But just to say that we will keep catering to the dumb audience, you will make everyone else around them also dumb. So instead of that, it's the same analogy that we can apply for media as well, for the news media. Facebook में कुछ भी बोल देता है. Facebook में there are a lot of news channels which are Facebook based. Yes, they have a website, but the primary audience is Facebook. वो likes चाहिए उसको. And that happens with all of us. I think whenever we put up a photo on our social media, we are looking for likes. नहीं तो you can click photo of yourself and phone को वापस रख दो. We don't have to share it, but we share it because we want the likes. We want the validation from an online audience, from strangers. कि like करो, comment करो, अरे एकदम बढ़िया लग रहा है. So we want that, so which is understandable. But I think as journalists, and I will speak for myself as a journalist and my fellow colleagues, the responsibility is on us to put out good content, to put out news that is sensible, that relies on facts, figures, and even context, not just jingoistic content, not just playing up issues where there isn't one. I think that is where we must draw the line. And this transition that we have seen from news media that we didn't know exist in Arunachal, moving on to television, now to social media. The transition that has happened and the transition that needs to happen. Now, I'm somebody who's from the print media. I think what we need to do as journalists, and for anyone else who wants to pursue a career in journalism, I think we need to equip ourselves with greater tools, greater skills. Just being able to weave a few sentences together is not going to be enough. We will need to be able to analyze data and present it in a manner that the audiences, the readership will be willing to take. Abhi वही same, black and white print paper में those 15 lines. Nobody wants to read that anymore. Everybody wants some color in their lives. Sorry, sir, we are running short of time. Okay, I'll wind up. In fact, actually, I wanted to say that as well. So that's why I said. So like I said in the beginning, that circling back to the versus part, I don't think there is a versus. There's no social media versus mass media. I think we must exist together. And in fact, in today's day and age, social media has become the mass media. It has wider reach than my newspaper will ever have. And so just to wind up, I just want to say that I was going to wind up because I got two different advice from my friends from the organizing committee. One told me to speak slowly, one told me not to speak too much. I think I have failed them both. I did not agree to either of them. So I spoke fast and I spoke too much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Ranju, sir, for your beautiful talk and your opinion and views on this one, social media versus mass media. Thank you so much. Because of time constraint, we could not give you that much of time. I'm so sorry for that. Now coming to the esteemed audience, I would like to request our esteemed audience to put questions to our esteemed panelists, at least 4 to 5 only, not more than that. So now you can start interacting with the panelists. Thank you so much.
Hello. Hello. You? I have 3 questions to expected. You can ask only one question. Oh, sir, this is 3 questions each to 3 finalists. One question each audience to 3 can finalists. ask only 5 questions altogether. So you just ask one question. Oh, okay. Hello. My question might be. Hello. It's a bit funny, but I consider it as my. Hello. 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 You are very much audible. You can ask from there also. No issue. Okay. Thank you, sir. Actually, my question is as ma'am, the first panelist. Since you have told us about biodiversity, so I have a question. It might be a bit funny, but please consider it as my genuine question. So, can COVID-19 virus can have a positive contribution toward biodiversity existence, a subsistence? Yeah, thank you. Okay, if I'm not wrong, if your question is that can COVID-19 contribute towards biodiversity, isn't it? Correct me if I'm wrong. Yes? Positive contribution of biodiversity, COVID-19 towards biodiversity. Okay. Positive contribution, if you ask me, that this COVID-19 has marked in our this one life, or so to say, biodiversity, is that it has actually made us realize that how vulnerable we are. Okay, that is first thing, that now we realize that we are so vulnerable, even to a simple virus. No, not simple, not so simple, but a single virus can make us hide in our, or hibernate in our homes, isn't it? So that's separate thing. But yes, how it has contributed towards biodiversity. So I would say that as far as I have, as far as related to my research, this COVID-19 has made us realize that there is a need to address what? Like one of the panelists said, food diversity. No, need to have food. During the COVID time, we were all running after what? Even though we had money in our pocket, in our purse, but we were all running after food. You could see lines of people all rushing just before the lockdown is being announced. People are rushing in Akasdeep or in some stores, and then they are collecting and storing for rest of the lockdown period. And even then, we, the indigenous people, tribal people, we are so used to boiled sabji, no? Boiled vegetables, herbs, that we cannot sustain with dal and aloo all the time. A week of dal and aloo made me cry for the want of vegetables. And in the meantime, I had a call, and I have communicated, I had a call with my grandfather there in the village, and he said, why not, Ajum, you come over here, we have plenty of it. Even in the jungles, you can collect it, from the streams, you can collect it. I was like, how I wish I could come there, no? Sitting here in the urban jungle, I could not even avail what I want, even though I have the money to purchase it, because the supply was short. So that, for the positive contribution is that it has made me realize that we need to, what? We need to cultivate this habit of growing kitchen garden, no? How much small it may look, like in pots. If you don't have space, in pots, but you have to grow something for your survival. So that is one way, one positive aspect of this COVID-19 that I have. But in biodiversity, as if you ask the positive aspect, as
as a whole, I don't see, but yes, it makes us realize the need of this biodiversity that we want. No, because I was crying for this diversity in these vegetables. I only got potato, tomato, and brinjal. I didn't want that. I wanted diverse food on my table, isn't it? So it made me realize, the positive aspect is that it made me realize, not only me, many of us, that the need of the hour is to diversify our food. No? Thank you. Hello. Good afternoon, Jilfa ma'am. Jilfa ma'am. Oh, thank you. I appreciate your knowledge, your concept and your idea. Actually, this question was, I was supposed to ask these questions before this one, yesterday in that our university, but I didn't get the time. I didn't get, time means time was limited all the time. So the question was that we all of us know that loss of culture is a loss of identity. But in the Arunachal Pradesh, after adopting a religions and accepting the modernizations which was not ours, so we have lost almost our old traditions and culture. As we also know that we are as indigenous, our culture, ritual and faith are very related. As Ajum ma'am has told us about the banana story, that is a kind of ritual. How indigenous people, they preserve the culture as well as the biodiversity through traditional ritual. Okay, so I wanted you to throw a light on this. Ma'am, are you getting the question? No, not clearly. Can you be more comprehensive? I'm not sure if I got exactly, but in the context of culture, identity, and change, from whatever I have, read in my own experience, change is something that is constant, and there will be change, and whether we try to, for instance, for tribal communities like us, the debate was rolled out many years ago, and with the people in Andamans, the government, government of India, debated a lot, and for some sections of people like the tribal communities, they decided that state induced change and development should not be imposed, and people should grow, take their own time and develop on their own. But in the context of Northeast, fortunate or unfortunate, can't say, we have really been downloaded with all sort of state-sponsored change and developmental schemes. Although, ironically, the drafter of tribal policy, Dr. Verrier Elwin, had, and Pandit Jawaharlal Nehru had said, that tribal should grow at their own genius. But that has not been so. But I guess now that is what I was also trying to link, that we are, it's not that tribal people are stupid. It's not like tribal people, because they are barbaric or savagic, they have less intellect capacity. Tribal people are, I know people from Arunachal, practicing as doctors in America, teaching in Australia, working in IITs. The human capacity, I guess, is the science people will know. Depends on an individual, like not because of being tribal or not. And with that, I guess it is on people's rationality to decide, what kind of future they want, what kind of change they want. Although it is,
it is quite evident that the state or any powerful institution would put on you that, you should have this kind of change through social media, through government policies, through many other, apparatus, that it will definitely, channel our lives through Google, make us dependent on internet. But like I said, humans or tribals in general, any person, to a great extent, have their own capabilities and should be able to decide what kind of change they want, should be able to decide what kind of society they want to be. Yeah, thank you. Ma'am. Hello. All right. Hello. Good afternoon. And my question is for Madam. All right. Audible. Ma'am, as mentioned about the real estate in Twin Capital, here as far we know that the real estate are all all involved people. So my question is that what is the alternate solution or suggestion for the prevention of art cutting? So as a panelist, what would you like to say to us or to the government or we as a youth? Whom is your question for? Ajum Madam. Can you please repeat once more? Okay. Ma'am, as you had mentioned about the real estate in Twin Capital, the art cutting, yeah, that is the issue. And here, as far as we know that the real estate are all involved with rich people. We can't deny the fact that. So my question is here that what is the alternate solution or suggestion for the prevention of art cutting? As a panelist, what would you suggest to what would you suggest to give to the government, public, as a as a welfare, no sir, no madam, as a welfare or to the youth also? What would you like to give a suggestion for the policy making and all that? Thank you, ma'am. Thank you for the question. Yes, my suggestion for not only art cutting but all the destructive activities that we humans do without realizing that ultimately it is us who is going to suffer. So my suggestion is that actually change is inevitable, as I said. No, it is a continuous process. Whatever way we may deny, but then it is a continuous process. But what is permanent is the change itself. That is permanent. So, like I said in my talk before, so we have to decide what actions we are taking. We should take it responsibly. And for that, the solution that I find, my personal view is that we need to have an amalgamation of the science along with traditional knowledge. I won't like to alienate traditional knowledge, okay? Because we have many instances where this traditional knowledge has proven a success. So there is a need. Science will provide the way, will provide the means, and the traditional knowledge will, since it has the ground level, it works in the ground level, it has the knowledge of the local ecosystem, so it will provide this one much needed information regarding the local ecosystem. And regarding art cutting, if you say if you think that it is related with rich people, then I would like to correct you here that it is not only related with rich people. I have witnessed and I have seen middle class people also, not so well-to-do, but then 2 and 3 of them, that is the strength. 2 and 3 of them, they gather money and then they are investing in this. So since my place, though I have been brought up in this capital region, but my home is near Bandadeva, no, in Karsingsa. So I have been a victim. I'm not a victim, but I have seen it personally. I have faced it. I have experienced it. What happens is that these people, they come, they get that whole hill area only for some few lakhs. And then they will cut it down. They will, for a month or so, and then they will sell it in plot. So that is real estate business. I have seen, I have witnessed it
And it has been a rampant process that has taken place over only in this over a few this one years. You can say it maybe 6 to 7 years. So I think I have answered your queries. Thank you. Hello, ma'am. For me? Hello. Audible? My question. Hello. My question is to Jilpa ma'am. Sorry, I'm the tough one to shooting question to you. During your presentation, tribal traditional culture and clanism in Arunachal. I'm confused here. That's why I'm shooting this question to you. You have referred about property rights to girls' child. I may be sounding patriarchal here, but my question is, don't you think that you also refer the APSU stand for state purism, whatever? And my question is, don't you think that it's identity versus egalitarian, since you were asking for equal society in Arunachal, and what I believe APSU is stand for, they are demanding this. Is demanding for safe tribal society. Don't you? How do you suggest to balance this? Thank you. Hello, sir. Thank you for your question. Can I? Your question was very long, so I'm not sure if I got it exactly, but from how I understood. Ma'am, okay? if you want me to rephrase it, okay. My question is, since you were referring about egalitarians and how girls' child is being denied the property here to inherit property in Arunachal, especially the land, I believe what you are referring. Don't you think that it's identity versus egalitarians, and how do you suggest to balance it? Identity versus egalitarianism. But I don't know if they can fit like that together, because egalitarianism means a society that stands for equal treatment of every individual in that society. That means, that is what the term egalitarian means. And I said tribal society traditionally has been or was an egalitarian society in the context of resources that Purana Zamana mein jungle, pani, kheti, the access to these basic resources have been, quite egalitarian. लेकिन असली का egalitarian नहीं है traditionally. Why? Because her tribal society में we have the history and tradition of using slave labor. Slave kidnap करके slave रखता था, या 2-3 शादी करके these women were also kept exactly like slave. So in that sense, it was not an जैसे एक egalitarian society को imagine करता है, it was not exactly like that. So traditional tribal society is egalitarian in the sense of resource use, but not in the sense of rights to each individual in tribal community. Regarding the APSU, fighting for tribal identity, is that what you meant? Fighting for tribal, yes, APSUs are doing their work, standing for tribal identity. But what I meant was, what tribal identity is APSU standing for? If they're standing for, what I draw is, generally, tribal identity is only
men's identity. Women, for instance, like me, today I'm Zilfa, I'm a indigenous person. Tomorrow I may marry somebody from Kerala, then tomorrow I'm an outsider. So tribal identity for women that means is very fragile. मतलब इतना fluid है, आज है कल नहीं है. But for men, आज है कल है, forever it is there. Right? So this is what I was saying, that is tribal identity only patriarchal identity? If it is, then who are we? Who are all these ladies? Who are all the ladies who gave birth to all the men? And if they are tribal, then what is their rights? Are their rights, is their rights only, remain, their rights will, to access of resources, their rights as an individual tribal person, will that remain only because, they are married to a tribal man? What about unmarried tribal women who decide just not to marry? So these are certain questions that I raised because I was asked to talk on the issue of woke culture. Woke culture is this cultural phenomena all over the world, whether it is among the Dalit movement, whether it is tribal movement in Jharkhand, Central India, whether it is Black Lives Matter movement in America, Aboriginals movement in Australia. This is a pan-world movement where people are coming out from their positions of marginality. Ki haan, we have been marginalized, historically we have been structurally marginalized, and we want to be treated as equal. So I was just asking the question that, is Arunachal youth part of the woke culture? Are they asking such questions? Are they thinking about such uncomfortable situations of inequality that they live every day in our society? So I hope I answered the question. Thank you. You can put one last question. Hello, sir. Yeah. ये तारो सर के लिए है ये क्वेश्चन हमारा. One last question. This will be the last. तो जैसे कि सर आपने बोला कि मतलब पहले बाहर को जानने से पहले अपने घर को जान लो, आपने ये बोला. तो इतिहास का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में, और सदियों से ये प्रथा चला आ रहा है कि मम्मी डैडी जो बोले वही करना, वही पहनना है, मम्मी डैडी जो बोले वही खाना है, मम्मी डैडी जो बोले वही करना है, नौकरी चाकरी करना है. तो कभी इस विषय में कि अपने कल्चर को जानो, और या फिर अपने आप को जानो, या फिर मतलब आप जो करते हो वो जो मैं बोलता हूँ उसी हिसाब में करो, मतलब ये जो मतलब आप इसमें मतलब अपना क्या सुझाव देना चाहोगे कि ये जो चला आ रहा है इसे बदलना है, या फिर ये क्या कारण हो सकता है जिसके कारण मतलब आज हम लोग जो है मतलब बाहर के तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं एंड अपने आप को भूल रहे हैं हम लोग, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला. तो वही है मेरा क्वेश्चन. तो फिर आप मार्गदर्शन कीजिए. हेलो, आपका सवाल जो है थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या पूछ रहे थे आप. फिर पूछता हूँ सर. हाँ, फिर से रिपीट करिए. ठीक है. तो जैसे कि आपने बोला शॉर्ट में राजा पॉइंट में पूछिए आप. शॉर्ट में पूछिएगा. ओके सर. तो जैसे कि आपने कहा कि बाहर को जानने से पहले, बाहर को पढ़ने से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को पढ़ो, थोड़ी देर पहले आपने बोला. तो सदियों से मतलब इतिहास का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज पे. जैसे कि जो प्रथा चला आ रहा है कि मम्मी डैडी जो बोले वही करना है, जैसे कि आपको ये खाना है तो ये खाना है, आपको ये पहनना है तो आपको ये पहनना है, ये नौकरी चाकरी करना है तो ये नौकरी चाकरी आपको करना है. तो इसी में मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि आप मतलब क्या सोचते हो और आपका सुझाव क्या है कि मतलब ये अभी जो मतलब ये हो रहा है, ये चल रहा है, तो ये इसका रीज़न क्या हो सकता है? नहीं, एक्चुअली आपका संदर्भ जो है वो अलग हो गया है. मैं लिटरेचर के बारे में बात कर रहा था, मैं लिटरेचर के संदर्भ में ही बात कर रहा था.
है ना, वो तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। जैसे कोरियन वाला मैंने जो एग्जाम्पल लिया, वो एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। और मैंने तो साहित्य के संदर्भ में बात किया कि हम अपने लिटरेचर को नहीं पढ़ते, इसीलिए हमें ये नहीं पता कि हमारे स्टेट में कौन कौन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। वो मैंने एक दुख जताया था कि इन 50 सालों में हम बहुत कुछ तरक्की कर लिए, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। तो वो बस एक उदाहरण था। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि आज हम जिस तरह से अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, अपनी जो पहचान खो रहे हैं, उसके कारणों को आप पूछ रहे हैं क्या कि ऐसा क्यों है? हाँ, मतलब ये क्या, मतलब हमारे पेरेंट्स की वजह से है या फिर क्या क्या रीज़न हो सकता है? मतलब आप अपने तरफ से बोलिए, आपका क्या सोच है वो? हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की भी इसमें कमियां रह गई है, क्योंकि आज के जो जनरेशन है, जो भी वो सीखे हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं से अपने घर से ही सीख कर आए हैं। तो हमसे पहले वाली जो पीढ़ी है, उसमें भी कहीं ना कहीं चूक रह गई कि उन्होंने उस तरह की कोई व्यवस्था बनाकर नहीं छोड़ा व्यवस्थित ढंग से कि हमें हमारी रीति रिवाजों को इस ढंग से सीखना चाहिए। क्योंकि हमने जो कुछ भी सीखा है, हमें बाहर वालों ने सिखाया है। इवन अपने धर्म के बारे में भी हमें बाहर वाले आकर बता रहे हैं। अभी जो ध्वनि पोलोइज्म का जो अभी आंदोलन चल रहा है, ये भी हमारे लोगों ने स्वयं नहीं उसको जाना है। तालोम रुगबो के बारे में ऑब्वियसली हम लोग बात ज़रूर करते हैं, उन्होंने शुरू किया है, लेकिन इसको एक व्यापक रूप देने में आज बाहर के लोग आ रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि आपकी ये संस्कृति ऐसी है, आपकी ये थी वो थी। तो कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट नहीं होने के कारण या फिर रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण जो है, हमारा वो जो परंपराएं हैं, वो रीति रिवाज हैं, पहनावे की बात करो, यो विश्वास है, धार्मिक आस्था है, वो कहीं ना कहीं जो है मतलब गुमनाम सी हो गई हैं। तो हम लोगों ने बाहर से चीज़ों को देखकर फिर अपने आप को देखना शुरू किया। तो अभी क्या है कि जब ध्वनि पोलोइज्म की बात आने लगी, तो क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो गया है, ऐसा लगता है। कुछ क्रिश्चियन से ले लिया, कुछ हिंदू से ले लिया, इस तरह की बातें हो रही हैं। इवन पहनावे भी ऐसा है कि कहने को तो ट्रेडिशन है, लेकिन बहुत आधुनिक है। हर बार हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया डालें। तो हमारे यहाँ ये बुज़ुर्गों ने भी क्या कहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गया है, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाया जिसमें हम वो जो ठेठ जो पारंपरिक है वो कह सकें। लेकिन आज की जनरेशन तो क्या है कि वो पढ़े लिखे हैं, तो वो रिसर्च तो कर सकते हैं कम से कम, है ना। तो रिसर्च के लिए क्या है, आपको गांव-गांव में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। लेकिन लिटरेचर की अगर बात करें तो आप पहले उसको पढ़ें। आप लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप पता चल जाएगा, और आपको दिशा भी मिलेगी कि हम इस चीज़ में भी काम कर सकते हैं। तो अपनी रूट से दोबारा जोड़ने के लिए आपको इन साहित्यकारों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के लिटरेचर वो क्रिएटिव राइटिंग होने के बावजूद वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, उसमें बहुत रिसर्च करने के बाद लिखे हुए लिटरेचर हैं। तो वो एक दस्तावेज़ जैसा भी है, क्रिएटिव राइटिंग होने के बावजूद वो एक दस्तावेज़ जैसा है। तो इसलिए आप इन साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको अपनी संस्कृति के कई सारे आयामों से फिर से आप परिचित हो जाएंगे। हमारे पहले पीढ़ी जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो पढ़े लिखे थे वो इस तरफ नहीं सोचा, वो कुछ और दिशा में चले गए। पॉलिटिशियन बनना है, टेक्नोक्रेट बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है, लेकिन लिटरेचर वाला पार्ट को किसी ने छुआ नहीं। इसीलिए ये सारी खामियां आई हैं। आशा करता हूँ कि मैंने आपकी जिज्ञासा को पूर्ण किया होगा, शांत किया होगा जी। Thank you so much, sir. Just a concluding remark. We have listened to a host of panelists with different topics ranging from biodiversity to work culture, to students' politics, to sustenance in agriculture during this COVID-19 situation, then literatures of Arunachal Pradesh and media. So overall, I hope this was very educative, learning, enriching, productive, and I must say, a satisfying panel discussion. I would like to thank my dear esteemed panelists for all the lessons that you all have taught us this afternoon. Thank you so much. Thank you so much, I sir. would like to hand over mic Hello, to Jay. the host, Yes, Bangjo Bosai. thank you so much, sir. Well, the only epithet that can apply to this panel is young, active, and intellectual. Thank you so much. Leading from our
moderator, who is also one of the young professor of our state. So thank you so much for sharing all those information, insightful one to all of us, and I'm sure that we have all benefited from your discussion. So before going, please don't leave. We'll have a photo session, as I've been informed, and also I have some announcements to make. So with this, we conclude our panel discussion session, and we'll move to paper presentation. But after a short lunch break, and also there's another announcement. There's a program tomorrow with many resource person like Imtiaz Ali. So I've been informed that if anyone wants to attend tomorrow's program, then registrations are open. Thank you. Ladies and gentlemen, the paper presentation session will be conducted at a new hall, that is Nokmen Namati Hall. So right now we'll go for a short lunch break, and then we'll resume after it. Thank you. After the paper presentation session, please do not leave, because we have the cultural program. Our much awaited singers will be there to entertain us. So please stay back.